पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो चैनल पे जाके न्यू लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर चैनल पे नहीं जाना है तो यार थोड़ा ये वीडियो देख लो। चलो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। Atomic structure and chemical bond एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग नाम का ये चैप्टर हमें आज पढ़ना है। यही से कहानी शुरू करनी है। देखो, हम सभी जानते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम। एटम वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो। ए मींस नॉट एंड टोमियो मींस कटेबल, सो व्हिच इज नॉट कटेबल दैट इज नोन एज एटम। जिसे कट ना किया जा सके उसे ही हम लोग एटम कहते हैं। सो हर एक चीज जो कुछ भी दुनिया में पाई जाती है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर एक चीज एटम से मिलकर के बनी होती है। एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग अबाउट माय हेल्थ। इट इज गुड, फीलिंग बेटर। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ लेकिन ठीक हूँ, बेहतर हूँ कल से। अच्छा, और कुछ परेशान होने वाली चीज नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि बेहतर ठीक करने पर यह सो फीलिंग बेटर। चलिए वापस चलते हैं। एटम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी एटम हैं उन्हीं को आपस में एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन, बॉन्डिंग एक्सेट्रा करा करके डिफरेंट मटेरियल से हम पैदा कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कोई नया एटम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी एटम को हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये दोनों बातें हम एटम, मैटर और एटम के बारे में लिख करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम ये लिखना चाहते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ वेरी tiny particles called atoms. Matter is made of very tiny particles called atoms, which are indivisible structures. जिन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अब रिसर्च जब आगे बढ़ती है तो हम ये पाते हैं कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। सो एटम इज आल्सो हैविंग सम पार्टिकल्स, दीज आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो यू कैन राइट लाइक दिस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। दीज प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। सो
Matter is made of very tiny particles called atoms. Which are invisible structures. Atoms can neither be created nor destroyed. मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। दीज प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इट इज नेगेटिवली charged particle. It is negatively charged particle, and then charge is equal to minus 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, and mass is equal to 9.1. Hello, thank you for joining. इसी तरह से जो दूसरा पार्टिकल है हमारे पास, that is known as a proton. प्रोटॉन में हम लोग कह सकते हैं इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, and mass of proton is very high as compared to electron. It is roughly 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram. Approximately 50 times the higher mass एक प्रोटॉन का होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन। So proton is very heavy particle as compared to electron. या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1/50 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन चार्ज दोनों पर सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज अपोजिट है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। देन जो लास्ट पार्टिकल हमारे पास है दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। It is electrically neutral particle. It is electrically neutral particle. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। चार्ज इस पर जीरो होता है, कोई भी चार्ज नहीं होगा। और जो मास है इसका, दैट मास इज अगेन रफ और है न्यूट्रल, लेकिन चार्ज दोनों पर सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज अपोजिट है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। देन जो लास्ट पार्टिकल हमारे पास है दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। चार्ज इस पर जीरो होता है, कोई भी चार्ज नहीं होगा। और जो मास है इसका, दैट मास इज अगेन रफली अराउंड मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 into 10 raised power minus 27 किलोग्राम। हालांकि स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं कहेंगे, बट मोर और लेस अपनी सब्जेक्ट के लिए हम लोग इक्वल मान करके चल सकते हैं। सो दीस थिंग्स यू मे बी नोइंग, बट फिर भी रिकैप करते चलते हैं इस सब्जेक्ट में, क्योंकि जीएस हम कह रहे हैं, इसका मतलब ज्यादातर बहुत एलिमेंट्री चीजें होंगी जो आप पहले से जानते हैं, उन्हीं की रिवाइज करते जाएंगे। सो प्लीज गो अहेड, राइट डाउन, और जैसे लिख लिया करें तो मुझे सूचित भी कर दें, मुझे बता दीजिए।
सर टाइम पास करते। कहाँ चले गया रे सर? आ गया। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है हमारे पास, और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल मिलकर के एटम बनाते हैं, ठीक, और उसी एटम की प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। एटम के लिए वेरियस एटॉमिक मॉडल्स आए, जिनमें से एक दो मॉडल में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर आगे की थ्योरी डेवलप करेंगे। पूरा सारे मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर उतना ही फिजिक्स की चीजें पढ़ेंगे जिनसे मटेरियल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दिस। द फर्स्ट पॉइंट इज कि हम लोग देखना चाहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके जो एंटिटी बनती है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिला करके दोनों के पास में मास पाया जाएगा, ठीक, और ये मास में पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है नहीं और प्रोटॉन के पास ही चार्ज होता है। सो मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू अ वेरी स्मॉल रीजन, और इस स्मॉल रीजन को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस। This small region is known as nucleus, right? So it is known as nucleus. अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका कहना था रदरफोर्ड का कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सम सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सम सर्कुलर पाथ। कुछ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के पास में पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से, अभी ना एक सिंपल एटम के लिए कंसीडर करते हैं, रादर देन मेकिंग दिस एंटायर स्ट्रक्चर, लेट अस मेक ओनली वन ऑफ इट। सो उसका दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, प्लस एंड माइनस आर। दिस फोर्स इज नोन एज कूलम्बिक फोर्स। आपको इसका नाम जानना चाहिए, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्स वर्क्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन या दो चार्जेस के बीच में। सो इट इज नोन एज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Coulombic force of attraction. This Coulombic force is also known as electrostatic force. It is also known as electrostatic force. इसे हम लोग electrostatic force कहते हैं, Coulombic force या electrostatic force, ठीक। ये जो Coulombic force है, it is same kind of force as the gravitation force. आप एक चीज देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये फिजिकल क्वांटिटी, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी और ये दोनों की दूसरी डिस्टेंस है। सो इस तरह से हमारे पास ये फोर्स आता है। आप ये देखिए, ये कांस्टेंट है जस्ट लाइक जी, ये पहली फिजिकल क्वांटिटी, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों की डिस्टेंस। सो बोथ ऑफ दीस फोर्सेस आर एग्जैक्टली सेम। इस वजह से रदरफोर्ड एक कंक्लूजन निकालता है कि जिस तरह से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं, दिस इज द प्लैनेट, जिस तरह सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं, जैसे M1 मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस r, इस फोर्स के कारण प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को कई बार हम प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स विद द प्लैनेट्स। जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से ये भी रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर सन का रोल न्यूक्लियस प्ले कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट का रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को कई बार हम प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स विद द प्लैनेट्स। जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से ये भी रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर सन का रोल न्यूक्लियस प्ले कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट का रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस वे इट इज वेरी सिमिलर विद द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, दिस एटॉमिक मॉडल। बात बहुत सही थी, काफी कुछ हद तक चीजें एक्सप्लेन भी हो रही थी, बट एक प्रॉब्लम ये आई कि एक महोदय थे मैक्सवेल, और मैक्सवेल ये कहते थे कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा और अगर उसके ऊपर चार्ज है तो उस चार्ज पार्टिकल के मोशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होगी तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी रिलीज होते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी कि दैट इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक, तो कहना ये है कि सब कुछ सही था रदरफोर्ड के मॉडल में, बट रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर रहा है, क्योंकि मैक्सवेल ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो मोशन में है, और जब भी कोई नेगेटिव चार्ज मोशन में होगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी अगर रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी पूरी एनर्जी यूज करके एंड इट विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ना कुछ कमी है। अब रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर भाई साहब आते हैं और अपना मॉडल लेकर के आते हैं, जिसे बोहर मॉडल कहते हैं। लेकिन फिर भी रदरफोर्ड का मॉडल कुछ बातें तो एस्टैब्लिश करता है। पहली बात ये एस्टैब्लिश करता है कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस। दूसरी बात ये एस्टैब्लिश
करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे आर वेरी लाइट पार्टिकल एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये दो फैक्ट बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं इस बात की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी वो दे नहीं पाया। तो बाकी के जो बाद के मॉडल है वो इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कंडीशंस है, अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर रिवॉल्विंग, दैट वुड बी एक्सप्लेन बाय द फर्दर मॉडल। इससे पहले के जो मॉडल थे जैसे थॉमसन्स मॉडल था या और भी जो उससे पहले के मॉडल थे वो ये मानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू द न्यूक्लियस, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, whereas nucleus is still basically it is spinning around its position but it is not moving, so nucleus is bulkier thing and that is still, whereas electron is lighter and it is moving। so एक तरह से दो ये कह लीजिए कि ये जो मॉडल था वो एक दो पार्ट में फिजिक्स को डिवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड फिजिक्स को। पहला पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को इम्बेडेड मान करके चलती थी पुराना, और दूसरा अब जो मान के चल रही कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो कुल मिलाकर के बड़ी जबरदस्त ब्रेक थ्रो रहा फिजिक्स में रदरफोर्ड के इस मॉडल की वजह से, और रदरफोर्ड आपको नोबेल प्राइज वगैरह भी मिलता है इसके लिए। लेकिन चलिए उतनी सब बातों में जाने की जरूरत नहीं, दो तीन बातें मैं डिक्टेट कर रहा हूँ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन 3 थिंग्स रिगार्डिंग रदरफोर्ड मॉडल। On the basis of on the basis of on the basis of famous alpha particle scattering experiment, famous alpha particle scattering experiment, famous alpha particle scattering experiment, Rutherford proposed the nuclear model of atom. Proposed the nuclear model of atom. Proposed the nuclear model of atom. On the basis of famous alpha particle scattering experiment, Rutherford proposed the nuclear model of atom. हेलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। बे यार कितना स्लो पढ़ा रहा। Basis of his famous alpha particle scattering experiment, Rutherford proposed the nuclear model of atom. The nuclear model of atom. The nuclear model of atom. According to this model, according to this model, according to this model, the positive charge and most of the mass, the positive charge and most of the mass, the positive charge and most of the mass is concentrated, the positive charge and most of the mass is concentrated in extremely small region, in extremely small region, in extremely small region. This very small portion of atom, this very small portion of atom, this very small portion of atom was called nucleus, was called nucleus. This very small portion of atom was called nucleus, was called nucleus. So, the nucleus is surrounded by electrons. The nucleus is surrounded by electrons. The nucleus is surrounded by electrons. Surrounded by electrons, which move with a very high speed, which move with a very high speed, which move with a very high speed, with a very high speed, which move with a very high speed in circular path called orbits. In circular path, which move with a very high speed in circular path called orbits, called orbits, called orbits. Electrons and nucleus are held together. Electrons and nucleus are held together by electrons and nucleus are held together by electrostatic forces of attraction.
by electrostatic forces of attraction. By electrostatic forces of attraction. So this was told by Rutherford, but Rutherford का मॉडल जैसा मैंने बताया कि फेल हो गया, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि मैक्सवेल ये कह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उसको कुछ एनर्जी इमिट करना चाहिए, और अगर एनर्जी इमिट होगा तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगा तो इट कोलैप्स, एंड इट कोलैप्स न्यूक्लियस। बोहर आते हैं, बात को एक्सप्लेन करते हैं और वो लेकर के आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल से बोहर से चलता है। बोहर एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन एटम, बोहर एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन। बहुत ही मॉडल हाइड्रोजन के लिए दिया, हाइड्रोजन इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार हाइड्रोजन के लिए चीजें समझ लेते हैं फिर उसको एक्सटेंड करेंगे बाकी अदर एलिमेंट्स के लिए भी, लेकिन लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर हाइड्रोजन। वो कह रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स, p प्लस n। हाइड्रोजन में तो सिर्फ प्रोटॉन होता है, मान लीजिए न्यूट्रॉन सी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर प्लस q का चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अ नेगेटिव पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं ना कहीं रिवॉल्व है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सम सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट की रेडियस में। पहला ये ऑर्बिट, देन दूसरा ऑर्बिट, देन तीसरा ऑर्बिट, लाइकवाइज ऐसे ही इनफिनिट ऑर्बिट। वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रिवॉल्व कर सकता। It is the first orbital equal to 1, it is the second orbital equal to 2, it is the third orbital equal to 3, likewise up to 4. He's saying that electrons are revolving only in those orbits for which angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ओनली इन दोस ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। अब ये सेटिस्फाई होगा इस जगह पर, इस जगह पर। न्यूक्लियस के ऊपर प्लस q का चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अ नेगेटिव पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सम सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट की रेडियस। पहला ये ऑर्बिट, देन दूसरा ऑर्बिट, देन तीसरा ऑर्बिट, लाइकवाइज ऐसे ही इनफिनिट ऑर्बिट। वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रिवॉल्व कर सकता। It is the first orbital equal to 1, it is the second orbital equal to 2, it is the third orbital equal to 3, likewise up to 4. He is saying that the electrons are revolving only in those orbits for which angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ओनली इन दोस ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। अब ये सेटिस्फाई होगा इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इसके बीच में ये कहीं भी सेटिस्फाई नहीं। इससे हम क्या इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं? इससे एक बड़ा इंप्लीकेशन ये निकाल सकते हैं कि लेट अस सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी रेडियस तो हर पॉइंट पर r1 होगी। सो हर पॉइंट पर अगर रेडियस फिक्स है तो उसका मास इनटू वेलोसिटी भी फिक्स है। अब n = 1 h by 2 pi आपका कांस्टेंट है, h इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होगी, इट इज प्लांक्स कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, वैल्यू इज 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड। ठीक है, तो अगर हम r1 में कहें तो r1 में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रॉन है, एट एनी पॉइंट ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रॉन, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? r। ठीक,
मास इनटू वेलोसिटी mv इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई r। अब ये हर पॉइंट पर फिक्स है, तो ये वैल्यू भी हर पॉइंट पर क्या होगी, फिक्स होगी। और अगर हर पॉइंट पर किसी भी प्लेट का आर्बिट में लिखा हर पॉइंट पर m इंटू बी फिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर व्हिच यू कैन राइट एज p स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे आप क्या करोगे, m से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो इट विल बिकम mb का होल स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर बाई 2m। तो अगर p कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, एंड डिस्टेंस एट ईच पॉइंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज सेम, सो पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। वो है ये चाह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी कांस्टेंट है, और अगर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। तो जो मैक्सवेल की बात हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द स्ट्रीम। कह रहे थे कि इट इज अ मूविंग पार्टिकल, इट शुड इमिट एनर्जी, वो बात अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सेकंड नहीं होगा, इस बात की एक्सप्लेनेशन वो कर देते हैं। तो जो रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम थी उसको वो दूर कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसकी टोटल एनर्जी। आज आपके ऑप्टिकल, अरे हाँ, अरे वो मैं बेड पे रख के भूल गया, फिर बैठने के बाद में याद आया कि उधर रखा है, तो अभी कोई मम्मी या पापा आएंगे तो बुलवा लूँगा। अभी वो इधर सब वायर वगैरह है ना आजू बाजू, तो उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए इन ऑर्बिट्स को हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, इसीलिए इन ऑर्बिट्स को हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। इन्हें अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी कहा जाता है, दीज आर आल्सो नोन एज अलाउड एनर्जी स्टेट्स। इन्हें अलाउड एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है। ऐसी स्टेट जो इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड है, दे कैन बी ऑक्युपाई दोज स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन या तो इस स्टेट में हो सकता है या इसमें बीच की किसी भी स्टेट में ये नहीं पाया जा सकता। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू स्टे इन द मिड स्टेट्स, इट कैन स्टे इन द फर्स्ट स्टेट, इन द सेकंड स्टेट, इन द थर्ड स्टेट, लाइकवाइज कहीं पर भी हो सकता है, बट उसके बीच की किसी भी स्टेट में अलाउड नहीं, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अलाउड स्टेट। अब एक चीज देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी अलाउड स्टेट में जाएगा तो उसकी रेडियस चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी तो पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E3, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E4, लाइकवाइज इस तरह से। हायर एनर्जी स्टेट से किसी लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो यहां पर उसकी एनर्जी E3 है, यहां आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E2 होगी।
तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये उसे रिलीज करना पड़ेगा। तो बोहर दूसरी बड़ी बात ये कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट देन इट्स एनर्जी चेंजेस। लेकिन जब किसी एक ही स्टेट में है तो उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। So when an electron is making transition from high energy state to low energy state, then some amount of energy will be released, which is equal to the difference of energy between the two orbits. इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो एनर्जी भी इक्वल टू दिस अमाउंट ही एब्जॉर्ब होगी, इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं हो सकता। एक और सरप्राइजिंग बात वो कहता है कि दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई इज directly proportional to the nu. So this delta E is equal to h nu. This is equal to h nu. H nu is energy of a photon and basically energy of a radiation. Nu is frequency. This nu is nothing but frequency and h is Planck's constant. तो ये कुछ बड़ी बातें बोहर के मॉडल में निकल करके आती हैं। हालांकि बोहर का मॉडल भी फेल हो जाता है क्योंकि वो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाता। हीजनबर्ग कहता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली बता पाना पॉसिबल नहीं है। देयर विल बी सम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। लेकिन बोहर का मॉडल देखिए तो दोनों ही चीज को साइमल्टेनियसली बता रहा है। पोजीशन मतलब रेडियस और मोमेंटम मतलब एमबी, दोनों को ये साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली मेजर कर रहा है। तो बोहर्स मॉडल इज वायलेटिंग द हीजनबर्ग प्रिंसिपल, बट स्टिल इट हैज गिवन अस सम आइडिया अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, पर्टिकुलरली सेल या ऑर्बिट के कांसेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसका बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और ये एक तरह से फाउंडेशन स्टोन है मॉडर्न फिजिक्स की। इसी के ऊपर मॉडर्न फिजिक्स बिल्ट अप होती है। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जो लोग मुझसे ईडीसी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसको बहुत डेप्थ में वहां हम लोग बात करते हैं, बट यहाँ सरफेस पर थोड़ा बहुत बातें जरूर करेंगे। सर आई एम फ्रॉम केरला, आई डोंट नो हिंदी, कुड यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश? Yesterday I was asking you whether the batch is English or batch is Hindi, and most of the people told me that the batch is Hindi speaking. So that's why I was speaking in Hindi, but I will keep on speaking in both of the languages. You first note down whatever is written on the board, then I will tell you what you have to write. You please note down this and I'm coming in a minute. थोड़ा सा आज हिकअप्स रहेगा, मैं बीच में जो मुझे थोड़ा मीटिंग सी आ रही है तो मैं एक मिनट के ब्रेक पर आता रहूँगा, ठीक। सो आप इसे लिखिए, तब तक मैं आता हूँ। सर भी होती है
Noted? चलिए कुछ बातें. Someone has asked what is the weightage of material science in ESC prelims paper 1. In ESC prelims paper 1 it is very highly variable. I have seen 8 to 15 questions, minimum 8 questions, 7 I think, 7 to 15 I have found. So बड़ा huge variation है, कभी 7 question तो कभी 15 question, total 100 question का पेपर होता है, आपको पता होगा. So it depends upon your luck, whether it is asked in margin or not. That depends upon. लिखिए सर. According to Bohr's model, according to Bohr's model, according to Bohr's model, that's the first point. The electrons in the hydrogen atom, the electrons in the hydrogen atom, the electrons in the hydrogen atom can move around the nucleus, can move around the nucleus, can move around the nucleus in a circular path of fixed radius, in a circular path of fixed radius and energy, and energy, energy. Popular can move around the nucleus, can move around the nucleus in a circular path of fixed radius, in a circular path of fixed radius and energy, and energy, circular path of fixed radius and energy. These paths are called, these paths are called, these paths are called stationary states, stationary states, stationary states or orbits, or orbits, stationary states or orbits, or allowed energy states, or allowed energy states, or allowed energy states. Second point. An electron can move only in those orbits. An electron can move. An electron can move only in those orbits. Only in those orbits. For which? For which? Its angular momentum is. Its angular momentum is. Its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, h by 2 pi, h by 2 pi. H by 2 pi. That is why only certain fixed orbits. That is why only certain fixed orbits. That is why only certain fixed orbits are allowed. That is why only certain fixed orbits are allowed. ये पॉइंट लिख सकते हैं. यही पॉइंट आपको स्टेटमेंट में लिखना है. MBR equal to -5. You complete it. That is why only certain fixed orbits are allowed. Third point. When an electron jumps, when an electron jumps, when an electron jumps, when an electron jumps, when an electron jumps from an orbit of higher energy, from an orbit of higher energy, from an orbit of higher energy, हाँ ला दे. मेरे को चश्मा भी होना उधर. when an electron jumps from an orbit of higher energy to another orbit of lower energy, to another orbit of lower energy, to another orbit of lower energy, then energy lower energy
habit of lower energy. Then energy is released in the form of radiations. Then energy is released in the form of radiation, and vice versa, and vice versa, and vice versa. The amount of energy released are absorbed. Then and हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। यार अब इसको क्या हो गया? then energy is released in the form of radiation, and vice versa, and vice versa, and vice versa. The amount of energy released are absorbed. The amount of energy released are absorbed. Released are absorbed. Is the difference of energies in the two orbits. Is the difference of energies in the two orbits. Is the difference of energies in the two orbits. The difference. The amount of energy released are absorbed. Released are absorbed. Is the difference of the amount of energy released are absorbed. Released are absorbed. Is the difference of energies in the two orbits. Is the difference of energies in the two orbits. The difference released are absorbed. Is the difference of energies in the two orbits. Absorbed. The amount of energy released are absorbed. Released are absorbed. Is the difference of energies in the two orbits. Is the difference of energies in the two orbits. Is the difference of energies in the two orbits. ये लिख लीजिए लास्ट वाला this E2 minus E1 is equal to HU, that is H2. थर्ड पॉइंट, ये जो हर ऑर्बिट है इसकी रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देयर इज अ फिक्स्ड फार्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस एज वेल एज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम्स. So let us try to see how can we calculate energy of electron in an orbit and the Bohr's orbital radius. Bohr's orbital radius. Orbital radius. Rn is equal to 0.529 n square by z angst. For hydrogen, z is equal to 1. For hydrogen, z is equal to 1. So it comes out Rn is equal to 0.529 n square angst. Hydrogen के लिए ये हो जाएगा. And for remaining elements, ये रहेगा. Where z is atomic number. It is atomic number of the element. ये element का atomic. तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी. इसी तरह अगर हीलियम हो तो उसके लिए 2 हो जाएगा. कोई और एलिमेंट हो तो उसके लिए वो वैल्यू हो जाएगी. So we can calculate the various orbits. Just first orbit calculate करना है, then you need to put n is equal to 1. Second orbit calculate करना है, then you need to put n is equal to 2. Third orbit calculate करना है, then you need to put n is equal to 3. So whatever orbit you want for that orbit you can calculate like this. For hydrogen atom, z should be 1, but let us suppose it is helium, then z is equal to 2, z is equal to 3 for other elements, and like that you keep on putting the value of z. Z is atomic number of the element जिसके orbit की radius आप calculate करना चाहते हो. Similarly, energy of electrons in Bohr's orbit. Energy of electrons in Bohr's orbit. Bohr's orbit. Energy of electrons in Bohr's orbit. अभी इसका क्या करोगे? खाना कैसे खाओ? भेंचुरे तो सोचा ही नहीं मैंने.
हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। एक आइडिया कर सकते हैं अपन, इसको ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे का नहीं दिखे। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखने को तो चैनल पे जाके चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो चैनल पे जाके न्यू लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक कर दो। और अगर चैनल पे नहीं जाना है तो यार थोड़ा ये वीडियो देख लो। चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो की क्वालिटी भी कुछ ख़राब नहीं है, बट जब भी कमेंट्स आते हैं तो ज़्यादातर कमेंट्स इस बारे में होते हैं कि आपका माइक कौन सा है और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों साउंड कर रही है। आई डोंट नो, मैं अपनी खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ अभी, बट हाँ ऐसा है। कुछ लोगों को तो यकीन तक नहीं होता कि मेरा जो माइक है वो सिर्फ 3000 रुपये का है और इस 3000 रुपये के माइक से मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ। तो कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, बट आज मैं इस वीडियो में आपको ये प्रूफ भी करने वाला हूँ कि ये वही मोआना का माइक है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। वही 3000 रुपये का माइक है और उसी से मैं हर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो ऑडियो ऐसा साउंड कैसे करता है, उसके कुछ टिप्स हैं, उस बारे में आज बात करने वाले हैं। जनरल बातें होंगी, ध्यान से सुनना जरूरी है ताकि आप भी ऐसी ऑडियो क्वालिटी पा सकें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीना, मैं डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम वीडियो को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखो, पहले मैं बात करता हूँ रिकॉर्डिंग प्रोसेस की। मैं अपनी रिकॉर्डिंग कैसे करता हूँ। जो मेरा माइक है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि सस्ता है, हालांकि वो नहीं है सबसे अच्छी बात। सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो रिकॉर्डिंग एरिया है ना, वो राउंड ना होकर सिर्फ इतना है, आप हर्ट बना सकते हो। मतलब एकदम अपोजिट। अगर ये कैमरे की तरफ की मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, आजू बाजू से थोड़ा बहुत कम रिकॉर्ड कर रहा है और सामने से सारी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर मैं इधर से बोलता हूँ तो आवाज़ कम रिकॉर्ड होती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है मुझे कि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मैंने कोई ऑडियो का स्टूडियो नहीं बना रखा। हमारा वीडियो का काम है तो ऑडियो का कोई मीडियम नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मेरी बैकग्राउंड नॉइस है, जो नॉइस जो बाहर से आ रही है, फिर इस गेट की तरफ से आ रही है, फिर बाकी जो साउंड्स है वो कम होते हैं। बस मेरी जो आवाज़ है जो इस तरफ है वो ज़्यादा रिकॉर्ड होती है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइस भी कम रिकॉर्ड होती है, एको भी कम रिकॉर्ड होता है और मेरी प्योर एक आवाज़ रिकॉर्ड होती है। दूसरी चीज़ वो ये है कि जो जिस रूम में जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सामान से भरा हुआ है। मतलब हमारे शूटिंग का सामान हो गया, फिर मेरे पर्सनल सामान हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब चीज़ें, लाइटें बड़ी हैं, वो सबसे भरा हुआ है। तो इस वजह से एको नहीं आती। वरना अगर आप इससे भी खाली, मतलब ये भी प्रॉपर एको प्रूफ नहीं है, तो अगर आप बड़े रूम में शूट करते हो तो एको बहुत ज़्यादा बनेगा। तो उसकी वजह से आपकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल
तो मेक श्योर आप जिस भी रूम में शूट करो वो जितना छोटा हो सके उतना हो, और उसमें जितना ज़्यादा सामान हो सके उतना ज़्यादा सामान हो। एक छोटी सी टिप और है कि अगर नीचे ज़मीन पे कारपेट होता है तो ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड होती है, और सामने और साइड में अगर पर्दे लटके हुए होते हैं तो ज़्यादा अच्छा साउंड आता है। हालांकि मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इतना काम करने की, बट अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी आवाज़ से रिकॉर्ड होती है। थर्ड टिप बेसिकली आपकी आवाज़ है, जैसे आपकी आवाज़ की टोन है वो वैसे ही रिकॉर्ड होगी, वो वैसे ही आप उसको एडिट कर सकते हो, उसको प्रॉपर तरीके से चेंज नहीं कर सकते। आप आलिया भट्ट के आवाज़ को शाहरुख खान की आवाज़ नहीं बना सकते, आपको शाहरुख खान की आवाज़ को अमिताभ बच्चन की आवाज़ नहीं बना सकते, वो एक पर्टिकुलर वैसी आवाज़ रहेगी आपकी। तो कभी भी किसी को मिमिक करने की जरूरत नहीं है कि यार इसकी आवाज़ से साउंड करिए, मेरी एग्जैक्ट ऐसे साउंड करिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी की आवाज़ भारी हो सकती है, किसी की आवाज़ पतली हो सकती है, किसी की आवाज़ बीच में हो सकती है। तो उस चीज़ को आप जैसा साउंड करते हो वैसा ही आप साउंड रियलिस्टिक रखो, और उसकी वजह से आपका एक अलग टेस्ट बनेगा आपकी आवाज़ का, और लोगों को आवाज़ पसंद आएगी। अगर मैं मान लो अमिताभ बच्चन की तरह बात करने लग जाऊँ तो आपको हो सकता है मज़ा ना आए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं किया मैंने। बट अगर मैं मान लो भारी आवाज़ में ज़बरदस्ती बात करने लगूँ वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर मेरी जो ओरिजिनल आवाज़ है उसमें बात करूँगा तो वो ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। आपको खुद की आवाज़ निकालनी है, ना कि आवाज़ को भारी करके बात करनी है, ना कि आवाज़ को पतली करके बात करनी है, बिल्कुल भी नहीं। जैसी आपकी आवाज़ है वैसे बात कीजिए। ये बंद करने के लिए यूट्यूबर बना था क्या मैं? हालांकि ये बात करते करते मेरी आवाज़ खुद की भारी होगी। और चौथी और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसको बोल सकते हैं वो है आपकी एडिटिंग। देखो मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ थोड़ा सी भी सॉफ्टवेयर में, तो बिल्कुल फ्री है। मैंने उसके लिए ट्यूटोरियल 2 डाल रखे हैं ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, या फिर आगे पीछे मतलब एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख लेना। और मैं बताता हूँ कि मैं सबसे पहले नॉइस रिडक्शन करता हूँ, उसके बाद में अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ग्राफिक इक्यू के थ्रू थोड़ा सा बेस देता हूँ, थोड़ा ट्रेबल देता हूँ, थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। एंड थर्ड मैं अपनी जो पीक कर रही होती है आवाज़ उसको कंप्रेस कर देता हूँ, उसको लिमिटर बोलते हैं आई थिंक, तो लिमिटर लगा देता हूँ। तो बेसिकली मैं 3 चीज़ें करता हूँ, बट कभी कभी मैं ज़्यादा भी करता हूँ, कभी कभी कम करता हूँ, डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरमेंट। कभी कभी मैं अपने दूसरे स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं अलग तरीके के इफेक्ट्स लगाता हूँ, यहाँ पे मैं अलग तरीके का काम लेता हूँ, और इतनी चीज़ें करता हूँ। मैं ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करता। तो ये भी टिप समझो, ना तो शूट करते टाइम फेक बनना है, ना एडिट के टाइम पे प्रॉपर फेक बनना है। कि ऐसा नहीं कि बेस अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, हाँ आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि शुरुआत में मैं अपनी आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस दे देता था। बट अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना रियलिस्टिक काइंड ऑफ बेस दे सकूँ क्योंकि वो ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ना हो। तो ओवर किसी को नहीं करना, ना कि शूट के टाइम पे और ना ही एडिट के टाइम पे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूँगा। बाकी ऐसे वीडियो और क्लियर होकर बता देना। बाकी वॉइस को एडिटिंग कैसे करते हैं जब ये विचार बाकी देशों में गया, जैसे मान लीजिए यूएसए में गया, जैसे मान लीजिए भारत में आया, तो इन देशों के समझदार लोगों ने अपने समाज की हकीकतों के हिसाब से इस विचार को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू किया। राजतंत्र के समर्थक, समृद्ध लोग, चर्च के समर्थक, यथास्थितिवादी लाइट में बैठे, और धीरे धीरे ये मुहावरा फैलने लगा, फ्रांस के बाहर भी फैलने लगा कि राइट में होने का मतलब ये होता है और लेफ्ट में होने का मतलब ये होता है। अब क्या होता है कि जब कोई विचार बाहर फैलता है, जब कोई विचार डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज का मतलब यहाँ प्रसरण से है, उसके फैलने से है, प्रसारित होने से है, दूर दूर जाने से है, तो कुछ मूर्ख लोग तो उस विचार को वैसा का वैसा फॉलो करने लगते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो उस विचार को अपने समाज की जरूरतों के हिसाब से क्या करते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। अब फ्रांस में जाति व्यवस्था नहीं थी, पर भारत में तो थी। फिर फ्रांस में उस समय रंग भेद का मामला उतना प्रबल नहीं दिखता था, अमेरिका में दिखता था। तो जब ये विचार बाकी देशों में गया, जैसे मान लीजिए यूएसए में गया, जैसे मान लीजिए भारत में आया, तो इन देशों के समझदार लोगों ने अपने समाज की हकीकतों के हिसाब से इस विचार को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू किया। तो क्या हुआ, तो आप सोचिए, देखिए यूएस में रंग भेद अगर एक सच्चाई है, तो रंग भेद के विरोधी, और रंग भेद वहाँ की वास्तविकता बनी महसूस, तो रंग भेद के विरोधी आमतौर पर अश्वेत होंगे या श्वेत होंगे, ब्लैक्स होंगे, व्हाइट्स होंगे, ब्लैक्स होंगे, विरोध करेंगे, और व्हाइट्स में से एक बड़ा हिस्सा, सब तो नहीं पर एक बड़ा हिस्सा चाहेगा कि व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि फायदा होता है। तो धीरे धीरे ऐसा दिखने लगा कि जो वहाँ के ब्लैक्स हैं वो लेफ्ट ओरिएंटेशन में जाने लगे, और जो व्हाइट्स हैं
वो राइट ओरिएंटेशन में जाने लगे, क्योंकि बदलाव की भूख उनमें ज़्यादा थी, जो परेशान थे। सीधी सी बात है, बचेगा आपने। फिर अगर मैं 1860s की बात करूँ, अमेरिका के दक्षिणी 7 राज्य जो उस समय अमेरिका से अलग हो गए थे, हिंद हुआ, सिविल वॉर हुआ, दास प्रथा को लेकर हुआ। दास प्रथा का समर्थन करने वाले राइट विंग थे और दास प्रथा का विरोध करने वाले लेफ्ट विंग थे। सीधी सी बात है, हर देश में ऐसा। जब बात भारत में आई तो भारत में भी ये हुआ, क्योंकि भारत में गरीबी अमीरी का अंतर जितना था उससे ज़्यादा अंतर जाति के स्तर पर था, शिविर के स्तर पर था। जो व्यक्ति जाति वाले आंदोलन में निम्न जातियों, निम्न कही जाने वाली जातियों के पक्ष में खड़े होंगे, उनकी ओरिएंटेशन क्या मान लिया गया कि वो लेफ्टिस्ट हैं। इसलिए अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, इनका दावा क्या है कि हम उन जातियों का नेतृत्व करते हैं जो इतिहास में नुकसान रही, तो इनकी ओरिएंटेशन कैसे मान ली जाएगी? लेफ्ट मान ली जाएगी। और जो जाति में उन जातियों का समर्थन करेंगे या उन जातियों के वोट बैंक पर बेस्ड होंगे जो परिवर्तन की बहुत भूख नहीं रखती हैं, जो मानती हैं कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, वो राइट हो जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो जाति के आधार पर हमने लेफ्ट राइट का एक मोटा मोटा मुहावरा लिया। दक्षिण भारत में पेरियार नाम के बहुत प्रसिद्ध आंदोलन करने वाले नेता हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नाम से आंदोलन चलाया। वो इतना महत्वपूर्ण आंदोलन है तमिलनाडु के इतिहास में, क्योंकि उन्हीं से द्रविड़ कजगम की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर डीएमके और फिर AIADMK सब कुछ वहीं से डेवलप हुआ। कहते हैं कि उनके ऊपर सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के तौर तरीकों का प्रभाव वैचारिक स्तर पर आ गया था, तो लेफ्ट ओरिएंटेशन आ गई थी, जबकि वो तो जाति की बात कर रहे थे। फिर महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन हुए बहुत सारे, जो लोगों ने भी किया। लोगों ने माना कि ओरिएंटेशन लेफ्ट की मानी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने लेफ्ट ओरिएंटेशन का व्यक्ति माना आगे चलकर, तो सी बात। फिर अमेरिका हो या भारत हो, दोनों जगह एक प्रश्न ये भी उठा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं जिस स्थिति में हैं सामान्यतः पुरुषों की तुलना में, वो स्थिति बराबरी की है, फायदे की है, नुकसान की है। तो इस पर एक सामान्य समझ है कि महिलाओं के अधिकार उतने नहीं है पुरुषों के पास। चाहे वो संपत्ति में देखें, चाहे नौकरी में देखें, चाहे पार्लियामेंट में देखें, सिविल सर्विस में देखें, किसी भी पावरफुल पोजीशन पर देखें, तो आप पाएंगे कि पुरुषों का अनुपात बहुत ज़्यादा है महिलाओं की तुलना। और केवल भारत में नहीं है, ये दुनिया भर में देखता है, हर जगह देखता है। तो महिलाओं के अंदर भी डिमांड पैदा होनी शुरू हुई। सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में हुई, और तब डिमांड सिर्फ इतनी, जिसको पहले दौर का फेमिनिज्म कहते हैं, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कहते हैं। सिर्फ इतना था कि वोटिंग राइट सबको मिलनी चाहिए। तो सफरेजिस्ट उस मूवमेंट को बोला गया। जब फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो इसी कहने सुनेंगे। तो जब फेमिनिज्म शुरू हुआ तब कहा गया कि ये लेफ्ट मूवमेंट है, क्योंकि वो समाज में परिवर्तन चाहते थे, बदलाव चाहते थे। फिर सेकेंड वेव फेमिनिज्म हुआ, थर्ड वेव फेमिनिज्म हुआ, रेडिकल फेमिनिज्म हुआ, लिबरल फेमिनिज्म हुआ, बहुत तरह के फेमिनिज्म हुए। और मोटे तौर पर यह मान लिया गया कि जो फेमिनिज्म के पक्ष में खड़ा होगा वो लेफ्टिस्ट है, और जो फेमिनिज्म के खिलाफ खड़ा होगा, विरोध में खड़ा होगा, जो कहेगा कि ना जो चल रहा है, उसकी ओरिएंटेशन कौन सी है? राइट की ओरिएंटेशन। इस तरह से ये मोटे मोटे खाके समाज के नेता बनते हैं। और फेमिनिस्ट होना अगर लेफ्टिस्ट है तो अगला सवाल भी है, आगे चल के बात आएगी जो थर्ड जेंडर है उससे क्या करेंगे, उनकी स्थिति तो महिलाओं से भी खड़ा है। अब देखिए बड़ा पेचीदा मामला क्या होता है कि मान लीजिए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, कुछ लोग फेमिनिज्म के पक्ष में खड़े झंडा उठा रखा है। अचानक आपने उनसे पूछा कि भाई थर्ड जेंडर के पक्ष में आप क्या सोचते हैं, और वो अभी से चेहरा करेंगे, क्या गंदी बात करते हैं आप, हमारी कुछ काफी क्या थर्ड जेंडर लेते हैं। अगली चीज बात ये एक दृष्टिकोण से लेफ्टिस्ट है, क्योंकि बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन जो उनसे खराब स्थिति में है उसकी स्थिति न बदले ये भी चाह रहे हैं। एक ही व्यक्ति एक पर्सपेक्टिव से लेफ्टिस्ट हो गया, दूसरे पर्सपेक्टिव से राइटिस्ट हो गया। और जो कहे कि LGBT या विशेष रूप से थर्ड जेंडर को अपने हक मिलने चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो फेमिनिस्ट की तुलना में ज़्यादा लेफ्टिस्ट हो गया। और इसलिए जो नए प्रश्न समाज में आते हैं, चाहे वो LGBT का हो, चाहे थर्ड जेंडर वाला प्रश्न हो, इन सब प्रश्नों के पक्ष में खड़े होने वाला व्यक्ति यहाँ पर क्या माना जाएगा? लेफ्टिस्ट माना जाएगा। और जो इनका विरोध करेगा, जो कहेगा कि सब बकवास बात है, अब प्राकृतिक है, गलत है। मम्मी चम्मच होना कहाँ? चम्मच रखने भूल के भूलते रख के रोटी सब्जी रख निसर्ग के विरुद्ध हैं, मतलब नैसर्गिक हैं, उन सबको क्या मानेंगे? राइटिस्ट मानेंगे। ये मोटा मोटा खाका इस तरह का बात की सकती है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बन गई, जो परिवर्तनों के पक्ष में है और समाज के कमजोर वर्गों की डिमांड्स के पक्ष में है, वो मोटे तौर पर जो चाहता है कि समाज जैसा है वैसा बदलाव ना हो, वो आमतौर पर राइटिस्ट है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, तो थोड़ा सा और अगर हम हल्का सा खाका चीज है कि आजकल जो लेफ्ट राइट की बात करते हैं, आमतौर पर
किस किस विचार को उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। राइट में आप देखेंगे कि एक विचार खूब प्रचलित चलता है, नेशनलिज्म। तो जो व्यक्ति नेशनलिज्म की बात बार बार करे, राष्ट्रवाद की बात बार बार करे, अब एक समझ बना सकते हैं कि वो राइट की बात करना चाह रहा है। तो नेशनलिज्म एक पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, दक्षिणपंथ का है। फिर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति रिलीजन को लेकर, बदलाव नहीं, रिलीजन, अपने रिलीजन की मान्यता को लेकर बहुत कंजर्वेटिव किस्म का है, रूढ़िवादी है, अड़ा हुआ है, वो अपने धर्म को सबसे महान मानने को लेकर उत्सुक है, तो दूसरे धर्मों को अपने लिए खतरा मानने को तैयार है। इस समय हर समय ना हो तो भी कम से कम ये टेंडेंसी उसके अंदर है। और बात केवल रिलीजन की नहीं है, बात भाषा की भी हो सकती है, लैंग्वेज की भी हो सकती है। जो व्यक्ति ये मान के चलता हो कि मेरी भाषा दुनिया की सबसे महान भाषा है और बाकी सबको मेरी भाषा सीख लेनी चाहिए, मुझे नहीं सीखनी चाहिए, बाकी सबको मेरी भाषा सीखनी चाहिए, तो चाहे रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे रेस हो, अगर किसी गोरे को ये लगता हो कि भाई सबसे महान लोग गोरे होते हैं, जो अश्वेत हैं, काले हैं, और जो मंगोलाइट्स हैं यानी कि चीन जापानी जो लोग हैं वो हमारे जमाने में हैं, इसका मतलब वो अपनी एक एथनिसिटी को लेकर, अपनी जातीयता को लेकर सम्मान के भाव से भरा हुआ है। और जो व्यक्ति अपनी जातीय पहचान को लेकर बहुत सम्मान के भाव से भरा हो, घमंड के भाव से भरा हो, आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति राइट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा। तो रिलीजन है, लैंग्वेज है, रेस है, और ऐसा क्या हो सकता है, किसी किसी मामले में कास्ट भी हो सकती है। अगर कोई ये मानता हो कि मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, जिस जाति से संबंधित, तो वो सबसे महान जाति है, उस जाति का गौरव अलग ही है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि सड़कों पर गाड़ियों के शीशे के पीछे जाति के नाम लिखे होते हैं, बाइक पे जाति का नाम लिखा होता है, कुछ नाम सब जाति का नाम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दक्षिण बंग गाड़ी के शीशे के पीछे भी दिखता है, उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, हर जगह पोस्टर कराएगा, तो तब समाज में आग खोल के देखते रहिए, हर जगह एग्जाम्पल नजर आएंगे। तो जिसको भी अपनी एथनिसिटी को लेकर बहुत गौरव का भाव है, मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि वो राइटिस्ट है। क्या ये लोग चाहेंगे कि हम माइनॉरिटी के राइट्स की बात करें, या जो अश्वेत हैं उनके अधिकारों की बात करें, या जो हमसे अन्य जातियों के जिनके अधिकार कम रहे उनके अधिकार की बात करें, या जो अन्य रेसेस के लोगों के अधिकार की बात करें? ये आमतौर पर इन प्रश्नों से दूर रहना पसंद करेंगे, दूर रहना पसंद करेंगे। अब इसके अपोजिट यहाँ करेंगे, बेसिकली जो किसी भी रूप में वंचित है, समाज की मुख्य धारा से बाहर निकल गए हैं, वो हर व्यक्ति, एक व्यक्ति कौन हो सकता है जो गरीब है। जैसे समाजवाद और मार्क्सवाद के लोग गरीबों पर फोकस करते हैं कि हर गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। एक व्यक्ति वो हो सकता है जो रिलीजन की दृष्टि से देखें तो माइनॉरिटी में आता है, जिसके लिए अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों में सुरक्षा चुनौती हो सकती है, तो माइनॉरिटी के राइट्स की भी बात करेगा लेफ्टिस्ट को लेकर। इसी तरह से ये माइनॉरिटी रिलीजन के मामले में भी हो सकती है, लैंग्वेज के मामले में भी हो सकती है, और रेस के मामले में भी हो सकती है। और इसी तरह से समाज के वो सारे वर्ग जिनको अपने अधिकार नहीं मिले, जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन राइट की बात करें, जैसे मान लीजिए सीनियर सिटीजन्स के राइट की बात करें, उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए, जैसे मान लीजिए जेंडर के आधार पर हम विमेन की बात करें, या फिर जो थर्ड जेंडर है उसकी बात करें। एक मोटा मोटा खाका ये है, इन सभी के पक्ष में आंदोलन करने वाला लेफ्टिस्ट है, और इन विचारधाराओं से भरा हुआ व्यक्ति राइटिस्ट है। अब एक आइडिया हमें हो गया, और हम भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर चाहें तो एक क्लासिफिकेशन में ला सकते हैं कौन सी पार्टी राइट की तरफ है, कौन सी पार्टी लेफ्ट की तरफ है। जैसे बीजेपी राइट की तरफ आपने कहा ही, शिवसेना राइट की तरफ है, ये भी आपने कहा, तो ठीक ही बात लग रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राइट की तरफ है, आपने कहा ठीक ही लग रहा है। एक पार्टी का हम भूल गए, MIM, वो किस तरफ है, जो ओवैसी सबकी पार्टी है, वो किस तरफ है, वो लेफ्ट है। वो राइट, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने समूह को केंद्र में रखकर पॉलिटिक्स करना राइट होना है, वो भी राइट है, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम लीग कहाँ आएगी, अभी राइट नहीं आएगी, इसी बात है ना। और किसी भी राज्य में कोई ऐसी पार्टी जो अपने राज्य के गौरव पर बात करती हो, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि मराठी मानुस को एक बात शिवसेना भी करती है, MNS भी करती है, तो पहले करती राइट में आती है। ऐसी कोई भी पार्टी हो किसी भी तरह की, तो राइट में आती है। कांग्रेस को फिलहाल हम लेफ्ट मान लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने शुरू में राइट की अपने। आम आदमी पार्टी कहाँ रखी है, कंफ्यूजन हो रही है, राइट में रखें। उनका वोट देखिए, वोट बैंक को पहचान लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। उनका वोट बैंक कौन है, गरीब लोग, और गरीब लोग वोट बैंक को ज़्यादा ओरिएंटेशन किस तरह हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। वोट बैंक है ना, केंद्रीय तरीका है पहचानने का, उससे तुरंत समझ में आ जाता है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, DMK, कंफ्यूजन और राइट के लेफ्ट। इसकी वजह क्या, उसके बारे में आइडिया नहीं है, या वैसे सोचे कि 4 लेफ्ट हो गए, राइट होना ही चाहिए अब। अच्छा, कोई बात नहीं। और बीजू जनता दल, मामला फंस गया कि चुरा रखे, समझ नहीं आ रहा। कोई बात, यहाँ से हम जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके पहले लेवल पढ़ाएंगे, 3-4 लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे, और उसके साथ ही बात खत्म हो जाएगी। फिर आप जो सवालों पूछिएगा। क्या होता है कि जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं और सोचते हैं कि दो में बांटते हैं, लेफ्ट और राइट, असली दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि हम बांट नहीं पाए, असली दिक्कत है कि हमने जिद ठान लिए कि हम दो में बांट देंगे सब चीज़ों। और ये दिक्कत जहाँ भी आएगी, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फिलोसफी में डाइकोटमी की समस्या। तो डाइकोटमी का मतलब है दो हिस्सों में हर चीज़ को बांट देने की जिद हमारे पे बैठी है। जब सच ये है कि दुनिया डाइकोटमिक है नहीं, दुनिया जिस प्रिंसिपल पर चलती है उस प्रिंसिपल का नाम कॉन्टिन्यूम है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। कॉन्टिन्यूम का मतलब है एक स्केल बना हुआ है, उस स्केल पर सब लोग अलग अलग पॉइंट पे होते हैं, ना कि केवल दो खांचों में सबको सेट कर सकते हैं।
ये समझाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं। क्या सच में गोरा काला पर्याप्त है, या उसके बीच में कई शेड्स और भी होते हैं? कई शेड्स होते हैं। कुछ बहुत गोरा है, हल्का गोरा, कम गोरा, काफ़ी कम गोरा, थोड़ा सा सांवला। ये हम करते 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 फिर पहुँचते हैं एक ऐसे व्यक्ति में जिसका रंग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक वैसी समस्या एक बार एक व्यक्ति के सामने आई समाजशास्त्र में। अगर आप देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी तक आर्थिक आधार पर दो वर्ग मानने की परंपरा समाजशास्त्र में चलती थी। एक वर्ग था रिच और एक वर्ग था पुअर, अमीर और गरीब। अगर आप मार्क्सिज्म को देखें, कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए जर्मनी के, तो इंग्लैंड में रहते, लिखते रहे 19वीं सेंचुरी में। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी खामी जो बाद में समझ में आई, जो मार्क्स के जीते ही समझ में आ गई थी, 1870 में समझ में आ गई थी। मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई और 1870 की शुरुआत में ये बात सामने आ गई थी कि एक बड़ी भारी गलती उस सिद्धांत में हो गई है। उन्होंने माना कि दो ही वर्ग होते हैं, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स, यानी कि अमीर और गरीब मान लीजिए। लेकिन इतिहास ने साबित किया कि वर्ग दो नहीं है। और कुछ लोगों ने साबित किया कि पहले का समाज जो एक त्रिभुज के आकार का होता था, अब का समाज डायमंड के आकार का हो गया। त्रिभुज का मतलब कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, अमीर हैं, बहुत कम हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैं, गरीब हैं। तो डायमंड का मतलब है कि मध्य वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, उच्च वर्ग में कम लोग हैं, निम्न वर्ग में कम लोग, सबसे ज़्यादा लोग तो मिडिल क्लास में। और अगर मिडिल क्लास सबसे बड़ी है, जिसको मार्क्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्लास के रूप में, तो सिद्धांत सर्वाइव कैसे करेगा, चल नहीं पाएगा। ये पूरा किसी लॉकवुड और गोल्डस्कॉट नाम के दो लोगों ने काम किया, बहुत विस्तार में किया है। इस बात को समझते हुए फिर एक समझ बनी कि भाई हम ऐसा करते हैं, रिच और पुअर के बीच में एक मान लेते हैं कि मध्य वर्ग भी है, मिडिल क्लास भी है, और अब 3 क्लासेस हो गई, जिसका जिक्र आप लोग भी करते हैं आजकल। कोई आपसे पूछे कौन से वर्ग में आप कहेंगे कि मैं मध्य वर्ग में हूँ, वो उच्च वर्ग में है, ये निम्न वर्ग में है। तो जो व्यक्ति झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, आप बोलते हैं कि वो निम्न वर्ग में है। जो फ्लैट में रहता है, आप कहेंगे मध्य वर्ग में है। जो भी कोठी में रहता है, पूरा बंगला बना के रहता है, आप बोलेंगे कि वो उच्च वर्ग में, मोटा मोटा अगर क्लासिफिकेशन करना है। जो साइकिल पे चल रहा है, आप कहेंगे निम्न वर्ग में। जो स्कूटर या बाइक पे चल रहा है, बोलेंगे मध्य वर्ग में। जो लंबी कार में चल रहा है, बोलेंगे उच्च वर्ग में। यही तरीके है समझने का। फिर दिक्कत, कार में दो तरह के लोग चल रहे हैं, एक वो जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, वो नैनो में चल रहे हैं, पहिए जा रही हैं दोनों के पास। फिर बाइक में भी एक वो बाइक है जो बहुत छोटी सी इसी तरह से बाइक बनाई गई है, और एक बाइक है जो 2000 सीसी की बाइक है, 15 लाख रुपए की आती है। दोनों बाइक पे चल रहे हैं। तो आपको लगा कि ये तो मामला बिगड़ गया है, नहीं चल पा रहा, 3 में भी नहीं चल पा रहा है। और अमेरिका में 1960 में एक चिंतक हुए, सच ना, उनको डब्ल्यू लॉयड वार्नर कहते हैं। उन्होंने किताब लिखी क्लास इन अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी। तो बोले कि समय आ गया कि हम 3 क्लास से भी काम नहीं चला पाएंगे, अब हमें क्लासेस 6 कर देनी चाहिए। और वहाँ से पहली बार 2 शब्द है जिससे इस्तेमाल आजकल आप लोग खूब करते हैं। एक बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास और एक बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। सुना है आप लोगों ने, इस्तेमाल भी करते होंगे, है ना? ऐसे गरीबों में भी 2 वर्ग हैं। एक है जो बहुत ही गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर क्लास, और एक नॉर्मली पुअर क्लास कह लीजिए, गरीब कह लीजिए। ऐसे अमीरों में भी 2 वर्ग है। अमीरों में एक है अडानी अंबानी टाइप का अमीर, जिसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, या इलॉन मस्क टाइप का है, या गूगल के मालिक जैसा है, या मार्क जुकरबर्ग जैसा है, जिसकी कुल संपत्ति अगर आप मानें कि $200 बिलियन के आसपास है। इसको गुना करने में बहुत टाइम लग जाता है, 200 बिलियन। 100 करोड़ डॉलर को वो 200, यानी कि 20,000 करोड़ डॉलर, उसको 100 से गुना करने के रुपए करने के लिए तो 20 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति है। एक तो वो अमीर है, एक छोटा मोटा बोलने का अमीर है, जिसके पास अपना एक घर है, 1-2 गाड़ियाँ हैं, 1-2 स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी हैं, उसके बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, 2-4 दमन होकर चलता है, चलते भी 4 गाड़ियाँ चलती हैं साथ, और सारे 20 लोग पैसा उतरते हैं गाड़ी से। अभी तो वो नहीं है, पर वो मुकाबला इलॉन मस्क से कैसे कर पाएगा बेचारा? तो अमीरों में कुछ लोगों ने 2 वर्ग मान लो, जो सुपर रिच क्लास है और जो एक रिच क्लास है। 6 वर्ग हो गए, जो शुरू में 2 थे। और उसके बाद तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा ये काम छोड़ दो, मिडिल क्लास में भी पता नहीं कितने वर्ग हैं, हर मिडिल क्लास के व्यक्ति की अपनी स्थिति है, और इसके अंदर भी पता नहीं कितने वर्ग हैं, यानी कि 50 वर्ग बना लोगे तो भी हर व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इसी को बोलते हैं कि डाइकोटमी में नहीं जाना है, कॉन्टिन्यू में जाना है, निरंतरता में जाना है। सिर्फ ये समझना है कि कौन से व्यक्ति की स्थिति किसकी तुलना में कैसी है। अगर मैं इस बात को एक लाइन से समझाऊँ तो बात शायद ज़्यादा आसान हो जाएगी समझना हमारे लिए। तो एक लाइन एक स्केल है बेसिकली, और इस स्केल में हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ही है, और ये राइट साइड है, ठीक। अब लेफ्ट और राइट साइड, इसका मतलब कोई ना कोई सेंटर भी होगा, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। अब हमें समझना है कि कौन सी पार्टी को या कौन से व्यक्ति के विचार को कहाँ पर सेट किया जा सकता है। पहले की अप्रोच क्या थी, लेफ्ट वाले सारे एक तरफ, राइट वाले सारे एक तरफ। लेकिन आपको ये समझ में आता होगा कि जो व्यक्ति लेफ्ट में है, हो सकता है कि वो बहुत लेफ्ट में हो सकता है कम लेफ्ट में, ऐसे राइट में हो सकता है कि हल्का सा राइट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा राइट में हो, ये तो हो सकता है। और इसलिए हमने कोशिश की कि स्केल बना के समझें कि लेफ्ट या राइट में होने का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, बीजेपी राइट में है, आप सबकी सहमति है, शिवसेना भी राइट में है। अगर मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कौन ज़्यादा राइट में क्या होती है, शिवसेना बोलेंगे, क्या आपको सहमति है? शिवसेना और महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित सेना MNS, इनमें से कौन ज़्यादा राइट में है? आप कहेंगे MNS थोड़ा ज़्यादा राइट में है, आपको लगता है कि ज़्यादा
उसकी बड़ी वजह शायद ये कि सत्ता में नहीं है, सत्ता लेकिन ठीक हो जाए, लेकिन सत्ता में आने से पहले कुछ ऐसे आंदोलन करने पड़ते हैं जिससे जनता साथ में आ जाए। और जो MIM है, MIM को कहाँ रखेंगे राइट में, बीजेपी के आसपास, शिवसेना या MNS के आसपास नहीं, शिवसेना के आसपास रखेंगे तो ठीक है, मोटा मोटा खर्चा बन गया। और क्या MNS की तुलना में और ज़्यादा राइट का कोई सोच पा रहे हैं भारत के बाहर? जैसे हिटलर का जो सिद्धांत था नाजीवाद या फासीवाद, वो MNS से कम राइट है या ज़्यादा राइट है? तो बहुत खतरनाक राइट था, वो तो बहुत ही खतरनाक राइट था। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये तो हिटलर के फासिज्म या नाजिज्म का लेवल है, जो चरम है, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई ये कह दे कि मेरे अलावा बाकी समाजों को जीने का हक नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए, उनका सामूहिक हत्या कर देनी चाहिए, जिनोसाइड कर देना चाहिए, वो तो राइट का वो लेवल हुआ जिसकी आगे कुछ बचता ही नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसी स्थिति कम से कम नजर नहीं है, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी मोटे मोटे खाके के रूप में हमारे देश में हमेशा से बनी है। तो हम कह देते हैं कि चलिए हो सकता है कि MNS लगभग यहाँ स्टैंड करे, क्योंकि उससे हिंसा की बात उस तरह से कभी नहीं की कि जो गैर मराठियों को मार देंगे, हम जान से मार देंगे, थोड़ा बम पटाखे छूटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता कि खत्म कर देंगे, वैसे स्थिति नहीं। फिर आप कहेंगे कि भाई शिवसेना उनकी तुलना में थोड़ी कम एग्रेसिव है तो राइटिस्ट ग्रुप भी, तो शिवसेना को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और आपने कहा कि जहाँ शिवसेना है लगभग वहीं MIM और इंडिया AIMIM पार्टी है, उसको भी लगभग उस लेवल पर मान लेते हैं। ये हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी तुलना में कम राइटिस्ट है, तो बीजेपी को यहाँ रख लीजिए एकदम। तो एक तरफ का समझ में आ गया, तब समझ लेफ्ट की तरफ क्या कोई ऐसी पार्टी है जो एकदम सेंटर पर खड़ी है, एकदम लेफ्ट राइट? मुश्किल है कहना कि कांग्रेस को लेकर तो सामान्य समझ है वो ये है कि सेंटर लेफ्ट पार्टी है, जो सेंटर के आसपास का इलाका है ना, जो पार्टी इसके अंदर आ जाती है, इस इलाके को मोटा मोटा मान लीजिए, इसको बोलते हैं सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट। तो लाल रंग का इस्तेमाल तो वहाँ करा लेफ्ट में, उनका रंग लाल होता है। इधर तो भगवा का इस्तेमाल और हरे का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक रहता है, गलती से हो गया, पर कोई रास्ते हम लाल ठीक हम चलाते हैं उस तरफ भी, इस तरफ भी। अब 4-5 पार्टी दिमाग में रखिए, कांग्रेस को लेफ्ट मान देते हैं, आम आदमी पार्टी को लेफ्ट मान देते हैं, इन दोनों में ज़्यादा लेफ्ट कौन है? कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? सहमति है? चलिए मैं भी सहमत हूँ। अब बताइए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी लेफ्टिस्ट, एक तरफ BSP है। BSP का लेफ्ट अमीरी गरीबी में कम है, उन जाति के प्रश्न पे है, पर है तो लेफ्ट ओरिएंटेशन। तो BSP और आम आदमी पार्टी में किसको ज़्यादा लेफ्ट मानेंगे? देखिए बढ़ गया, समाज बढ़ गया, समय बराबर मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। ये तो रोज भी चेंज होता है, कल BSP ज़्यादा लेफ्ट थी, आज आम आदमी पार्टी ज़्यादा लेफ्ट हो गई। ये तो मुद्दों पे भी तय करता है, कौन सा मुद्दा किस समय चल रहा है, ये तो बहुत सब्जेक्टिव बात है। समाजवादी पार्टी को भी लगभग वही रख लेंगे, रखेंगे। और RJD को, RJD कौन सी होती है? तेजस्वी यादव। हाँ बताइए, तो BSP से किस तरफ आसपास, ठीक है आसपास तो एक आसपास। अब बताइए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, उसे कहाँ रखेंगे? वो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा लेफ्ट है कि कम लेफ्ट है? ज़्यादा लेफ्ट है। और CPM और ज़्यादा लेफ्ट है। और CPI-ML ये क्या होता है? ये और ज़्यादा रिवोल्यूशनरी पार्टी है, कभी जब समाजवाद पढ़ेगी तो इसका नाम समझेंगे। तो सेंटर के नज़दीक जो पार्टी आएगी इस तरफ वो आ जाएगी कांग्रेस और इंडिया कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, जो भी किसके हाथ में? राहुल गांधी के हाथ में। इससे थोड़ा सा इधर यहाँ रख लेते हैं लगभग कुछ पार्टी को, जिनमें एक है आम आदमी पार्टी, और किसे रख लें आप? BSP को भी ये रखना चाह रहे हैं, SP को भी रखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से SP थोड़ी कम लेफ्ट होगी BSP की तुलना में, पर ठीक है मोटा मोटा मान लेते हैं। अब RJD को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, अब DMK को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो ठीक रख लीजिए। DMK का ओरिएंटेशन लेफ्ट का ही है, AIADMK DMK की तुलना में कम लेफ्ट है, कि तो उसका ओरिएंटेशन लेफ्ट की तरफ ही ज़्यादा रहता है। तो आप मान सकते हैं कि कांग्रेस और इसके बीच में कहीं AIADMK शायद आ जाएगी। बीजू जनता दल ने बहुत स्पष्ट विचारधारा अपनी बताई है, लेकिन वो की ओरिएंटेशन थोड़ी सी लेफ्ट की उसकी लगती है। तो आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि कांग्रेस के आसपास कहीं बीजू जनता दल भी आ जाएगा। ये एक इसमें किसी पार्टी को नाराज ना हो जाए, सुनते हैं ना, मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। आप तो बहुत हेलो भाई, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो भाई, थोड़ी हेल्प हो जाएंगी मेरी, मोटिवेशन बना रहता है, बाकी कुछ नहीं। Good evening, Namaskar. Let's begin with the first chapter of this subject. In the last class we have another Z is equal to 1. So it comes out Rm is equal to 0.529 n square. Hydrogen के लिए and for remaining elements, where Z is atomic number. It is atomic number ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट का एटम। तो
तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर हीलियम हो तो उसके लिए 2 हो जाएगी, कोई और एलिमेंट हो तो उसके लिए वो वैल्यू हो जाएगी। So we can calculate the various orbits. This first orbit calculate करना है, then you need to put n is equal to 1. Second orbit calculate करना है, then you need to put n is equal to 2. Third orbit calculate करना है, then you need to put n is equal to 3. So whatever orbit you want for that orbit you can calculate like this. For hydrogen atom, Z should be 1, but let us suppose it is helium, then Z is equal to 2, Z is equal to 3 for other elements, and like that you keep on putting the value of Z. Z is atomic number of the element जिसके orbit की radius आप calculate करना चाहते हैं. Similarly, energy of electrons in Bohr orbit. Energy of electrons in Bohr's orbit. Bohr's orbit. Energy of electrons in Bohr's orbit. This is given by En is equal to minus 13.56 Z square upon n square electron volt. Minus 13.56 Z square upon n square electron volt. Z is atomic number of element. N is 1, 2, 3 up to so on like that. Electron volt is EV is known as electron volt. This electron volt is unit of energy. This is unit of energy. This is unit of energy. ये energy की unit. 1 electron volt is given as 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. This is the 1 electron volt. इसे हम 1 electron volt कहेंगे. So this way you can calculate energy of electron. Please note down these two formulas. इनके एक क्वेश्चन करेंगे. Do it quickly. नहीं पा रही सभी अभी पहले पढ़ाई करो, जरूरत की चीज़ें हम पढ़े ठीक अंबर बेटा पढ़ाई करो, तुम मार्क्स सिलेबस इधर उधर की चीज़ें हम पढ़े नहीं पा रही सभी अभी पहले पढ़ाई करो, जरूरत की चीज़ें पढ़ो. मार्क्स जानने से एग्जाम में वो आएंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता यूपीएससी का. अगर कोई ये कहता है कि प्रेडिक्टिंग यूपीएससी इज मेकिंग फूल ऑफ UPSC is not predictable. Sometimes, particularly GS paper 1, never predictable, right? That's why you may have seen last year even 40, 50 score was considered to be good score after 2. Sequence, it hardly matters. It depends upon teacher. The teacher wants to teach what subject, what topic, when. ये teacher पर depend करता है कि पहले कौन सा पढ़ाना चाहता है, बाद में कौन सा पढ़ाना. So don't worry about all those combinations and combinations, right? Focus on whatever is being taught. Focus on that thing, right? Come to the point. For hydrogen atom, let us see the energy of electron. For hydrogen atom. Z is equal to 1. This is the atomic number. Then energy of electron. Energy of electron. En is equal to minus 13.56 divided by n square electron volt. This is the energy of electron. For hydrogen. Let us see. Now देखते हैं. ये एक न्यूक्लियस है. Let us suppose हम यहाँ बना लेते हैं. This is our nucleus. We are going to withdraw some very popular conclusions, very important ones. This is first orbit. This is second orbit. This is third orbit. Likewise, we will keep on moving. So n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, up to 1. This is the edge of nucleus. This is edge of nucleus. So this point I am taking like this, which is edge of nucleus. Edge of nucleus. हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, we are going away from nucleus. Moving away from nucleus. Moving away from nucleus से दूर जा रहे हैं. So we are going away from nucleus. And we are wanting to calculate energy of electron. हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहते हैं. Energy of electron. First orbit में अगर हम energy of electron calculate करें, so this will come out as this is the energy of electron in the first orbit. E1. What is the value of E1? The value of E1 is n equal to 1, that's minus 13.56. Minus 13.56. Similarly, if I take this point, so energy of electron in the second orbit. So this is the energy of electron. N is equal to 2. This is E2. Minus 3.39.
Then here if you go, this is the third point. N is equal to 3. This is the third point. So it's E3 minus 1.51. Likewise, if we keep on moving, if we go here, in infinity, that is 0.00. This we are calculating for N is equal to 8. This values you can verify from here. Now let us suppose any electron is in the first orbit. कोई इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ. So इसकी रेडियस r1 और इसकी एनर्जी E1. E1 एनर्जी is minus 13.56. नेगेटिव नंबर मैग्नीट्यूड वाइज जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी. So negative number if magnitude wise is smaller then its value would be larger. So I can say that E1 is less than E2 is less than E3 up to so on which is less than E infinity. Is that it? E1 less than E2 less than E3 less than E infinity. Likewise. अब एक चीज देखिए, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. The greater the distance of an electron from the nucleus, higher is its total energy. एक और चीज, if electron is very close to the nucleus, let us suppose it is in the first orbit, then force experienced by the electron is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So this distance is very small, then this force would be very large. So if electron is in the first orbit, then it is tightly bound to the nucleus. And if electron is tightly bound to the nucleus, then this electron cannot go out of this orbit. इस electron को इस orbit से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है. It is very difficult to knock out this electron from its orbit. Right? So the electrons which are very close to the nucleus, their energy is minimum and the force of attraction is maximum. So these electrons are tightly bound to the nucleus and they are possessing very small amount of energy. So it is very difficult कि ये electron अपने orbit को छोड़ करके बाहर जाए. आप कहोगे why we are interested that electrons will leave its orbit? Yes, if it is not leaving its orbit, then it cannot participate in determining the property of it. For example, ये एक atom है यहाँ पर, and if electron is moving around this atom, then this electron cannot participate in electrical conduction. Because for conduction, electrons will move from this place to this place, then only the current will flow. And that is possible only if electron is leaving its nucleus and going away throughout this material. So these electrons which are very close to the nucleus, they are very tightly bound to the nucleus, they are possessing very small energy. So for these electrons, it is very difficult that they will leave their orbit. लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूरी पर है, लेट अस सपोज लास्ट ऑर्बिट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, अब यहाँ देख लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए r इंफिनिटी इज इंफिनिटी, ठीक, एंड देन फोर्स विल बी इक्वल टू 0. So जो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स नेगेट करता है. दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड नहीं है, तो इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन द मटेरियल. सच इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 0 हो या 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव हो, इट विल बी नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन. इट इज नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस. लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन जो इससे नीचे की एनर्जी में है, दे आर बाउंड पार्टिकल, दे आर बाउंड पार्टिकल. देयर एनर्जी इज डिस्क्रीट, एनर्जी इज नेगेटिव एंड क्वांटाइज्ड. एनर्जी इज नेगेटिव एंड क्वांटाइज्ड, नेगेटिव एंड क्वांटाइज्ड. उनकी एनर्जी नेगेटिव है और क्वांटाइज्ड है. क्वांटाइज्ड का मतलब एक लेवल के साथ दूसरा लेवल लाइक इट्स नॉट कंटीन्यूअस. जबकि जो फ्री है वो कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी ले सकता है, दैट कैन बी कंटीन्यूअस. लेकिन जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एनर्जी नेगेटिव है और क्वांटाइज्ड. दैट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. तो कुछ बड़े ऑब्जर्वेशन इस एक्सप्रेशन से ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्लोजर है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है और क्वांटाइज्ड है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फार अवे है, लेट अस सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, सो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स 0 है. अब ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल कंट्रीब्यूट इनटू द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल लाइक कंडक्शन, मैग्नेटिज्म एटसेट्रा. अब मुझे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाना है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? अगर मैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने की कोशिश करूँ तो इसके पास माइनस 13.56 एनर्जी है, मुझे प्लस 13.56 सप्लाई करना पड़ेगा. सो आई हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ. हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाना बहुत मुश्किल है. क्यों मुझे प्लस 13.5 सप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक एनर्जी 0 नहीं होगी तब तक ये फ्री नहीं होगा. लेकिन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो एक तो रेडियस बहुत ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, दूसरे इसकी एनर्जी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा है. सो वी नीड टू सप्लाई ओनली प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मींस वी नीड टू सप्लाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्री. सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड they can be easily knocked out of their orbit, and that's why they are easy to make free, and that is the reason they participate in various conjunctions, bonding, conduction, etc. So जो outermost orbit होता है उसे वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, और वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फाउंड इन द वैलेंस ऑर्बिट, बेसिकली इन द outermost orbit. Outermost orbit is far away from the nucleus, so its distance is large from the nucleus. It means it is loosely bound by the nucleus. Attraction force of the nucleus is very less, as well as its energy is also very high. इसकी एनर्जी भी काफी हाई होगी because it is far away, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. So please you draw all this figure and then I have to dictate all this conclusion. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. So draw this figure. Note down this and inform me as soon as you know. Done?
please note down. Note down. In any पॉइंट वाइज नोट करते चलिए. इन एनी एटम greater the distance of an electron greater the distance of an electron from the nucleus higher is its total energy. Higher is its total energy. Next one. In any atom, greater the distance of an electron from the nucleus, higher is its total energy. Next one. An electron orbiting very close to the nucleus, an electron orbiting very close to the nucleus. In the first cell is tightly bound to the nucleus. In the first cell is tightly bound to the nucleus. And possesses very small amount of energy. An electron orbiting very close to the nucleus in the first cell is tightly bound to the nucleus. And possesses very small amount of energy. So it would be difficult to knock out this electron. So it would be difficult to knock out this electron from its orbit. To knock out this electron from its orbit. On the other hand, an electron orbiting far from the nucleus, far from the nucleus, an electron orbiting far from the nucleus is loosely bound to the nucleus, and possesses greater amount of energy. Loosely bound to the nucleus and possesses greater amount of energy. This is the reason why valence electrons participate in chemical reactions and chemical bonding, etc. In chemical reaction, chemical bonding, etc. Done? इसे देख लें. On the other hand, an electron orbiting far from the nucleus
would have greater energy या higher energy जो भी लिखे, and it is loosely bound to the nucleus. It is loosely bound to the nucleus. So it can be easily knocked out of its orbit. It can be easily knocked out of its orbit. This is why it is the valence electrons. This is why it is the valence electrons that take part in chemical reactions. That take part in chemical reactions and chemical bonding with subject. And chemical bonding. Okay. I question. A question करेंगे. What your question is? Question is the radius of the first Bohr orbit of electron. The radius of the first Bohr orbit of electrons in hydrogen. The radius of the first Bohr orbit of electrons in hydrogen atom. Hydrogen atom is 0.529 angstrom. What is the radius of the second Bohr orbit? What is the radius of the second Bohr orbit? Bohr orbit. What is the radius of second Bohr orbit? In singly ionized helium atom. In singly ionized helium atom. Singly ionized helium atom. आपके ऑप्शंस हैं 1.05 मीटर इसका. ऑप्शन बी है 0.264 एंगस्ट्रॉम. ऑप्शन सी है 10.58 एंगस्ट्रॉम. ऑप्शन डी है 0.2026. Let's do it. Do it quickly. Ashraf, I have calculated outermost static energy of देखो. Which one orbit is outermost? Let us suppose this one is outermost. So how much is the energy? -1.351. So obviously -1.351 is greater than -13.56. यदि आपको यही नहीं पता है कि नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगी, then I can't help you. Then फिर तो मैं कुछ नहीं सकता. कुछ वही नहीं सकता. आप देखिए which one is greater? -1.51 is greater या -13.56 is greater? Obviously -1.51 is greater. वही बात लिखा है. So outermost orbit means last time. उसी को सबको लिखा है. बिल्कुल. Ashraf, answer your question. Do this question, tell me the answer. What is the answer of this question? Everyone please. A. Watch, battery. So many of you have given right answer. कई लोगों ने एकदम सही जवाब दिया. आइए देखते हैं. हमें कोई मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन में रेडियस क्या है. हमें क्या पता करना है? What is the radius of second atom? So n क्या हो जाएगा? और किसमें? हीलियम में. हीलियम का एटॉमिक नंबर. आयन वाले से रेडियस को तक नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाएगा, ये आ जाएगा. बट आर्बिट विल रिमेन सेम. सो बोहर्स ऑर्बिटल रेडियस डिपेंड्स ओनली ऑन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन आयनाइजेशन. दैट इज फिक्स्ड. So by putting these values, we can calculate the radius of second orbit. So we have Rn. Rn is equal to 0.529 n square by Z n square. Right? So I can put R2. R2 is equal to 0.529 2 by square divided by 2 n square. So it comes out as 1.058 n square. This is answer. Answer. It is answer. Please go down. Good. So let us move on to the next part of this discussion. बोहर की जो थ्योरी है वो ये मान करके चलती है इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल. लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होते हैं तो ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों काम नहीं कर सकते हैं. आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में दे हैव बीन थ्रू सेवरल काइंड ऑफ थ्योरीज, जहां पर कुछ थ्योरीज हैं जो ये एस्टैब्लिश करती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल, जैसे प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सब एस्टैब्लिश करता है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है. वहीं एक यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है कि जब उसमें ऑब्जर्वर रख देते हैं तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और ऑब्जर्वर हटा देते हैं तो वेव की तरह बिहेव करता है. सो अगली रिसर्चर्स पर कंफ्यूज्ड कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है या एक वेव है, क्योंकि दोनों के अलग अलग कैरेक्टर हैं. अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास कुछ मास होगा और मूव करेगा तो वेलोसिटी, सो मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी. ये सब कैरेक्टर है एक पार्टिकल. इसी तरह से अगर वेव होगा तो वेव के पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, दीज आर द एम्पलीट्यूड होता है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वेव. अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एट्रीब्यूट्स में डिस्क्राइब करना चाहिए, और पार्टिकल है तो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड सब एट्रीब्यूट्स में डिस्क्राइब करना चाहिए. तो अगले रिसर्चर्स के पास ये बहुत बड़ी समस्या थी. दे वर नॉट नोइंग व्हेदर इट पार्टिकल आर दिस वेव. तो उसके लिए बड़े फेमस साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल कहते हैं. ये 2020 में पूछा भी गया था. तो इसका स्टेटमेंट मैं अभी दिखा दूंगा. वो स्टेटमेंट 2020 में पूछा गया था. वेव पार्टिकल डुअलिटी.
वेव पार्टिकल। ये कहते हैं कि इस नौटंकी में पढ़ने की जरूरत नहीं। You need not to bother whether the electronic particle are wave. He is saying that it may behave like both. It may behave like a particle as well as it may behave like a wave. So लोगों ने कहा कि if it is behaving like both, then what is the connecting link between both characters? So this de Broglie principle establishes a connecting link between the wavelength of the particle and momentum of the particle. और de Broglie ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया मैटर वेव, क्योंकि ये मैटर भी है, इनके पास मास भी है और वेव जैसा बिहेव भी कर रहे हैं, so they are known as मैटर वेव्स। तो पहले डी ब्रोगली ने क्या कहा वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखाता हूँ। वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके यहाँ पूछा भी गया था। सो लेट्स राइट डाउन। लिखें। असर बहुत सिंपल सी बात है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वही अनस्टेबल होगा, वही निकल करके भाग सकता है। जिसके पास एनर्जी ही नहीं होगी वो जाएगा कैसे? सपोज यू आर इल, बीमार हो, तो क्या आप दौड़ोगे? नहीं ना, आप अपने घर पे पड़े हो, आपके पास एनर्जी ही नहीं कि आप दौड़ोगे। दौड़ता कौन है? जिसके पास एनर्जी होती है। सो आउटर वो टारगेट के पास एनर्जी है, इसीलिए वो निकल करके भागने को तैयार है, अपने घर से बाहर निकल करके दौड़ करके बाकी की चीजें भी करेगा। तो बीमार है, वो घर में पड़ा हुआ है, उसके पास एनर्जी नहीं, ये किसी बात नहीं समझ में आ रही। वो भी बात नॉट ठीक है। वेव पार्टिकल डुअलिटी लिखें। बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल डुअलिटी, बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल डुअलिटी, लुईस L-O-E-Y-S, Louis D. Broglie, based on wave particle duality, Louis D. Broglie proposed that particles of matter, bracket में लिखेंगे such as electrons, particles of matter such as electrons could exhibit a wave character in certain experiments, Listen, de Broglie proposed that a particle of momentum p has a wavelength given by lambda is equal to h by m v. H Planck's constant, P momentum, M mass of particle, V velocity of particle, lambda de Broglie wave. This was asked in university. So lambda is wave character and P is particle character. Both are corrected through this question. So this question is a bridge between the wave nature of electron and particle nature of electron. अब जो मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन को दोनों मानता है। इट अज्यूम्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। सो दैट मॉडल इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को वेव और पार्टिकल दोनों मान लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करता है चार क्वांटम नंबर्स की टर्म। वो चार क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 and 4. So in fact the concept of quantum number arises to explain this principle of wave particle duality और वहां से मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल निकल करके आता है। मैं बहुत डेप्थ में जाना नहीं चाहूंगा। ईडीसी जितने अगर किसी ने कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है जिसने मुझसे ईडीसी पढ़ी होगी तो वहां की सब बातें बहुत डेप्थ में करता हूँ, लेकिन यहाँ जीएस पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो हम सरफेस पर रहेंगे, थोड़ा बहुत उस मॉडल के बारे में बात करते हैं, देखा देखा की तरफ मूव करेंगे। सो हेडिंग को करेंगे वेव मैकेनिकल। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करता है। ये श्योरिटी से कहीं नहीं पाता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। ये कहता है कि ये न्यूक्लियस है तो इसके बियॉन्ड ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी है। या न्यूक्लियस है सम पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। सो ये जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह से ये मॉडल इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। मैं एक सिंपलीफाइड वे में इसको रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। बोहर के मॉडल और इसको कंपेयर किया जाए तो दोनों को सेम स्केल पर कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में मैं बोहर मॉडल रखता हूं तो बोहर मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज -13.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Then second orbit make electron peak energy is -3.39 electron volt. Third orbit make electron peak energy is -1.51 electron volt. And likewise we go for infinity and equal to infinity. Now you see, अगर मैं इसी मॉडल को
वेव मैकेनिकल मॉडल में बात करूं तो वो कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होगी जैसे 1s की तरह। देन सेकंड ऑर्बिट में दो सबसेल होंगे, तो n इक्वल टू 2 सेल को डिनोट करता है और इसमें दो सबसेल है 2s और 2, फिर 2p के अंदर भी एनर्जी स्टेट होंगी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। एंड देन इसी तरह से थर्ड में जब हम जाते हैं तो 3 स्टेट्स की बात करते हैं। सो इट इज 3s, देन इट इज 3p एंड देन इट इज 3d। सो आप एक चीज देखिए कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में जैसे ये न्यूक्लियस है तो पहले तो फिक्स था कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, अब कंफ्यूज है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है। सो इट विल इंटायर रेंज पे इट विल बिहेव लाइक अ वेव। सो बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ सबसेल या कांसेप्ट ऑफ एनर्जी स्टेट विद इन द सबसेल ये सब निकल करके आता है जब हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज इट बिहेव्स लाइक अ वेव, दोनों कैरेक्टर को लेकर के चलते हैं। सो आप ये फिगर बना लीजिए, तो एक लाइन में लिखा देते हैं व्हाट इफ मेजर जनरेशन, आपको नाम जानना चाहिए और रफ आइडिया होना चाहिए। मेरी तबियत ठीक होने के बाद मैं 2 लॉन्ग क्लासेस लूंगा। लॉन्ग क्लासेस से मेरा मतलब है मिनिमम 6 आवर्स की इफेक्टिव, सो 3 एंड हाफ आवर लेक्चर। डेज आप लोग बता दें, डिसाइड कर लें कि किस दिन करना है। आई वांट टू टेक 2 लॉन्ग क्लासेस, क्योंकि उस दिन मुझे एक दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, सेमीकंडक्टर वगैरह। कई साल ऐसा हुआ है कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के लिए सेमीकंडक्टर से पूछे गए, सो आई हैव टू एक्सप्लेन दोस टॉपिक्स। सो फॉर दैट आई यूज सम इंपॉर्टेंट डे जिस दिन, बट अभी कल और परसों नहीं, कल और परसों नहीं हेल्प थोड़ा सा तब तक कवर कर लेंगे। ये बना लीजिए। गुड, नोटेड। चलिए आगे। सर्टनली, हाँ शायद सर्टन। क्लासेस आर रनिंग फ्रॉम 8 to 6। अरे बेटा तुम तो वैसे भी अतिरिक्त लाइव कहाँ कर पाओगे 8 to 6 क्लास के बाद, तुम्हें तो वैसे भी रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। जिनका 8 to 6 चल रहा है वो तो वैसे भी क्लास नहीं देख पा रहे होंगे, तुम तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए आए होंगे। फॉर यू इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या बचा रहेगा साकेत, मतलब इसी में हो क्या, इसी या इलेक्ट्रिकल, ऐसा क्या बचा यार, इसी में तो लगभग सब खत्म हो गया। लेट्स सी, चलिए लिखिए वेव पोटेंशियल मॉडल। इन दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड in this model the electron is considered to exhibit electron is considered to exhibit both wave-like and particle-like characteristics। वैसे भी अगर किसी का छूट भी जाता है तो रिकॉर्डेड देखिएगा, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस वगैरह का बड़ा शेड्यूल ऐसा चल रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं 8 घंटे चल रही क्लास, क्योंकि 1 आवर क्लास चल रही है कहाँ ईजीएस देखते हैं, बिकॉज जीएस इज नॉट दैट मच सिस्टमैटिक जितना टेक्निकल होता है, बोरिंग भी होता है, यहाँ फैक्ट ज़्यादा रखने होते हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इन दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड to exhibit both wave-like and particle-like characteristics। Both wave-like and particle-like characteristics। With this model, an electron is no longer treated as a particle, moving in a discrete orbital, कॉमा लगाएं, and लिखें rather, rather position is considered to be probability of an electron's being at various locations around the nucleus
Full stop. In other words, position of an electron is described by a probability distribution or electron cloud probability distribution or electron cloud. Please, next one. The position of an electron in wave mechanical model the position of an electron in wave mechanical model is described by four parameters called quantum numbers. Next point, the size, shape, and spatial orientation. Spatial मतलब space में, spatial भी पढ़ते हैं. Spatial orientation. The size, shape, and spatial orientation of an electron. Probability density of an electron. Probability density are specified by three of these quantum numbers. Are specified by three of these quantum numbers. देखो ना 3D में किसी इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के लिए तीन क्वांटम नंबर सफिशिएंट है. चौथे क्वांटम नंबर से उसकी स्पिन बताती है, वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए मिनिमम कितने क्वांटम नंबर चाहिए. तो मैंने बताया कि साइज, शेप एंड स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन. कि मतलब न्यूक्लियस है तो किस ओरिएंटेशन में, साइज क्या है या रेडियस क्या है, किस शेप में है, स्फेरिकल है, एलिप्टिकल है, किस शेप में है, इस बात का डिस्ट्रीब्यूशन पहले तीन क्वांटम नंबर बता. चौथे क्वांटम नंबर से ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. सो अगर चार बता दूं तो एक्जेक्टली एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएगा. लेकिन अगर सिर्फ तीन पता है तो आप इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि वेदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और इट इज क्लॉकवाइज. ठीक है. सो आई वन बाय वन क्वांटम नंबर से पहले तीन. पहली क्वेश्चन, फर्स्ट वन. It is also known as principal quantum number. First quantum number. First quantum number, small density notation. It is also known as principal quantum number. It is also known as principal quantum number. It is also known as principal quantum number. It is given as n equal to 1, 2, 3, 4, 5. It represents cells. या ये ऑर्बिट्स कह सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? याद हो के एल एम एन अप टू बेसिकली पहली क्वांटम नंबर आपको बताती है कि डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कितनी है, इट्स पोजीशन, एंड इट इज द ओनली क्वांटम नंबर व्हिच इज रिलेटेड विद बोहर्स मॉडल. क्योंकि बोहर्स मॉडल आपको बता रहा है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट क्या है फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो यू कैन से दैट दिस क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द दिस क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is related to the distance of an electron from the nucleus, distance of an electron from the nucleus, or its position, या फिर its position.
It is the only quantum number which is related to Force model. This quantum number is related to Morse model. This quantum number is related to Morse model. अजीत ने लिखा कि सर क्लास थोड़ा पहले कर दीजिए। बेटा मैं तो जितने बजे कहो आप कहो, मैं 1 बजे से करती हूँ, लेकिन बाकी लोग नहीं आ पाएंगे। सो यू पीपल डिसाइड व्हाटएवर टाइम यू डिसाइड, आई विल ट्राई टू द मैनेजमेंट टू डू क्लास ऑन दैट टाइम। हमें तो ठीक है जितने पहले आप करो। मैं तो वैसे भी इसमें जिस तरह की हेल्प वगैरह में जल्दी घर जाना चाहूँगा, जल्दी स्टार्ट करना चाहूँगा, ठीक है, जल्दी खा के जल्दी सोना चाहूँगा। आप बता दो आप कितने बजे से चाहते हो, सब लोग बता दो कमेंट में कि एट व्हाट टाइम यू वांट टू स्टार्ट दिस क्लास, आई विल स्टार्ट दैट टाइम। ठीक है। आई सेकंड क्वांटिटी, सेकंड क्वांटम नंबर, इट सिग्निफाइज सबसेल्स। इसकी वैल्यू जो हम देते हैं, इस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज एल, सो इट सिग्निफाइज सबसेल्स। इट सिग्निफाइज सबसेल्स। इट सिग्निफाइज सबसेल्स। सबसेल्स क्या क्या होते हैं? एस पी टी एस, दी जाता सबसेल्स। इट इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सबसेल। इट इज रिलेटेड टू द shape of electron. It is related to the shape of electron. Next one. The number of these subcells are given by the number of these subcells. The number of these subcells are restricted by the magnitude of 10. Are restricted by the magnitude of 10. Are restricted by the magnitude of 10. That is, you see, L is equal to 0 to N minus. L is restricted up to 0 to N minus. For example, if N is equal to 1, so L will be 0, so only S subset. Okay. Then N is equal to 2, so N is equal to 2 is L is 0 and 1. So this is S and P subset. आपके पास दो subsets, S and P. N is equal to 3, so this will be L is equal to 0, 1, 2. So it is S, P, D subsets. Like that, you keep on increasing. So as the n value will keep on increasing, the number of subsets will keep on increasing. So basically, subsets are P, D, and F. So n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. This way, this will keep on increasing. You know down first quantum numbers, then I will be telling you the second quantum numbers. So we start from actually first quantum numbers. Please quickly. 6:30 को practically possible नहीं है पूजा बेटा. 6:30 मतलब 5:30 के बाद तो possible नहीं है. Then 3 seconds. As so that's why management may have decided in consultation with and detail. Yes, that is not taking this time here so much regarding time. That is not taking the last thing. That is not. So stop. And they will change the time. They will inform me and accordingly change the time. Third quantum. Third quantum. Third quantum. किसी सबसेल में कितनी एनर्जी स्टेट बेसिकली वो पोजीशन जहाँ पे एनर्जी पाई जाती है और एनर्जी किसकी बात होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो पोजीशन इलेक्ट्रॉन आपको बाई करेगा उस एनर्जी स्टेट। सो किसी सबसेल में कितनी एनर्जी स्टेट, इस बात के बारे में जानकारी मिलेगी थर्ड क्वांटम। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दिस। द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स फॉर ईच सबसेल इज डिटरमाइंड बाय थर्ड क्वांटम, और ईच सबसेल इज डिटरमाइंड बाय थर्ड क्वांटम, determined by third quantum. The number of energy states are determined by third quantum. Third quantum. No discussion, no further discussion on timing, right? Timing मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, ना मैं चेंज करता हूँ, टाइमिंग मैंने हाँ मैंने दो रिक्वेस्ट की थी, मैंने पहले बता दिया कि किसी 2 दिन में लॉन्ग क्लासेस दूंगा, जिससे मैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा और मैट्रिक्स प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मैं एक दिन में खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए जिस दिन इनको पढ़ाऊंगा मैं लॉन्ग क्लासेस दूंगा। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर रखा है। लॉन्ग का मतलब कि बहुत ये नहीं दिन भर 6 आवर्स इफेक्टिव क्लास, तो 2 क्लासेस आई विल टेक, उसमें भी आपको इतना परेशान नहीं होना है। जो नहीं लाइक कर पाएंगे वो अपना रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग लाइक है, खाली सब लोग लाइक नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग व्हाट इज बाकी के दिन क्लास टाइमिंग मिलती है 5:30 या आपको चिंता करना है तो टॉपिक। सो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स फॉर ईच सबसेल डिटरमाइंड बाय थर्ड क्वांटम। देयर आर 2l plus 1 values. There are 2l plus 1 values of ml ranging from minus L to plus S 1 energy state, P 3 energy states, D 5 energy states, and F 7 energy states,
7 एनर्जी स्टेट्स। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो किसी एक सेल में ये जितनी भी स्टेट होती है वो सारी सेम, जैसे P है ना, P में 3 एनर्जी स्टेट्स हैं और अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये सारी सेम होंगी। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाता है, दे स्लाइटली डिफर विद ईच अदर। इसीलिए इस क्वांटम नंबर को सही माना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है या ये पहले प्रेजेंस में इसका बिहेवियर चेंज होता है। सो सेकंड क्वांटम नंबर जो है ये एंगुलर मोमेंटम बताती है, तो इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम, एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक, एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग दिस वन वी से एज क्वांटम नंबर, ठीक, एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग दिस वन वी से एज एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली बात दिखाना चाहता हूँ, तो ये नाम लिखने की बात। सेकंड वन इज कॉल्ड एज एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड वन इज लोकल क्वांटम। यस, लोकल क्वांटम। In the absence of an electric field, in the absence of an electric field, sorry, in the absence of an external magnetic field, not electric, sorry, in the absence of an external magnetic field, in the absence of an external magnetic field, the states within each subcell are identical. The states within each subcell are identical. The states within each subcell are identical. However, when a magnetic field is applied, however, when a magnetic field is applied, these subcell states split. These subcell states split. These subcell states split. Each state assuming slightly different energy. Each state assuming slightly different energy. Each state assuming slightly different energy. Slightly different energy. Each state assuming slightly different energy. Slightly different energy. So इसीलिए इन्हें हमने नाम दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेवियर चेंज होता है। लास्ट क्वांटम, फोर्थ क्वांटम नंबर, इसे एमएस से डिनोट करते हैं, आल्सो नोन एज स्पिन क्वांटम, आल्सो नोन एज स्पिन क्वांटम। ठीक है, लास्ट क्वांटम, ठीक। तो इसीलिए इन्हें हमने नाम दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेवियर चेंज होता है। लास्ट क्वांटम, फोर्थ क्वांटम, इसे एमएस से डिनोट करते हैं, आल्सो नोन एज स्पिन क्वांटम, आल्सो नोन एज स्पिन क्वांटम। ठीक है, फोर्थ क्वांटम नंबर या इट इज आल्सो नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर, एमएस। देखिए क्या होता है कि किसी एक स्टेट पर इलेक्ट्रॉन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक क्वांटम नंबर होगी, लेट्स सपोज प्लस हाफ, तो क्लॉकवाइज के लिए सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डिफरेंट साइड पर माइनस हाफ। सो इट इज प्लस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज और माइनस हाफ फॉर क्लॉकवाइज। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए चौथी क्वांटम नंबर। इसमें दो तरह की मोशन है इलेक्ट्रॉन के पास, एक तो ऑर्बिटल मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण न्यूक्लियस के फोर्स दिखा रहा है, दूसरा ये अपनी पोजीशन पर भी स्पिन करता है, इसका भी अर्थ को मूव करके दिखाओ, अर्थ ऑर्बिट में भी मूव करती है प्लस अपनी पोजीशन पर भी स्पिन करता है। तो जो पोजीशन पर स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, दो तरह की। तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के करेस्पॉन्डिंग एक क्वांटम नंबर और क्लॉकवाइज स्पिन के करेस्पॉन्डिंग दूसरा क्वांटम नंबर। इस तरह से आप एक चीज देखो, कभी भी किसी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर से वो ही होता है। जैसे हम किसी एक स्टेट पर पहुंचे, रस को समझाओ, तो ये अगर n = 1 है पहली क्वांटम नंबर, l = 0 हो जाएगा दूसरी सेम, तीसरी क्वांटम नंबर nl से डिनोट करें वो भी। लेकिन अब इस जगह पर दो इलेक्ट्रॉन, तो इस जगह पर दो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा और एक ऐसा, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चौथी क्वांटम नंबर होगी वो प्लस हाफ होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो चौथी क्वांटम नंबर होगी वो माइनस। तो ऐसा संभव है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की तीन क्वांटम नंबर सेम हो जाए पर चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो। So every electron in an atom will have a different set of quantum number. इसके पास एक different set of quantum number. Every electron in an atom has a different set of quantum number. हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक different set of quantum number है। जैसे पहला इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर लूँ तो इसके पास set of quantum number क्या है, 1 0 0 and plus half. And दूसरा इलेक्ट्रॉन ये मान लूँ तो इसके लिए क्या है, 0 0 and minus half. So these are not same. The set is different. So इसे ही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। पाउली यही कहता है कि किसी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकती है। सो हियर यू कैन से कि ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, क्योंकि चौथी क्वांटम नंबर जो स्पिन है
तो या तो एंटी क्लॉकवाइज के होगी या क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए पास हो गया तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? माइनस। दैट्स इट। सो लिखिए कुछ बातें यहाँ पे लिखते हैं। फोर्थ क्वांटम प्लीज नोट डाउन। पूजा बेटा ऑफिस के साथ आईएएस की तैयारी काफी हिम्मत का काम कर रही हैं आप। व्हिच ऑफिस इज योर्स? व्हिच कंपनी? थोड़ा सा अभी आप लोगों के साथ में बातचीत नहीं कर पाया, थोड़ा रैपिड फायर मोड में खत्म भी कर रहा हूँ जीएस का। थोड़ा हेल्थ का भी इशू है और थोड़ा जीएस के सिलेबस में ये रहता है कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि मेन रोल जो होता है जीएस में वो इन्फॉर्मेशन का होता है रादर देन कंसेप्ट का। जीएस में बहुत डेप्थ में कंसेप्ट को बनाने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि चीज़ें जो पूछी जाएंगी वो समझ सरफेस पर पूछी जाएंगी, तो कवरेज बहुत वास्ट रखना पड़ता है। यही टेक्निकल में डिफरेंट हो जाता है, वहाँ कवरेज चाहे थोड़ा कम भी रखो लेकिन डेप्थ में जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा रैपिड फायर मूड में चल रहा हूँ, आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी आप अपनी बातें लिखते रहिए, मैं बीच बीच में जवाब देता रहूँगा। आप में से कितने लोग हैं जो मुझसे कुछ कहीं पढ़ चुके हैं इससे पहले? लिखें, फोर्थ में लिखिएगा, फोर्थ क्वार्टर में। एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन, एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन, एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन is a spin moment, is a spin moment, associated with each electron is a spin moment, which must be oriented, PHED, which must be oriented either anti-clockwise, either anti-clockwise or clockwise, either anti-clockwise or clockwise, or clockwise. Related to this spin moment, related to this spin moment, related to this spin moment is the fourth quantum number, is the fourth quantum number, fourth quantum number, for which two values are possible. Good. So from the bounds to already read EC from good. Very good. So आपको मुझे पढ़ाया होगा पहले से कि मैंने वन नंबर तो नहीं बात इनफैक्ट ज़्यादा टेस्ट में वहाँ पढ़ा होगा। लेकिन associated with each electron is a spin moment which must be oriented either clockwise or anti-clockwise. Listen. Related to this spin moment, related to this spin moment is the fourth quantum number, is the fourth quantum number, fourth quantum number, for which two values are possible, for which two values are possible, plus half and minus half, plus half and minus half, plus half and minus half. One for each of the spin orientations, one for each spin orientation, one for each spin orientations, one for each spin orientation. Full stop. Arpit is writing, sir, last year I studied material science for from not. अरे तो लास्ट ईयर पढ़े तो बैठे पढ़ने के लिए मटेरियल साइंस कौन सा करंट अफेयर्स से बदल जाएगा? मटेरियल में रिसर्च होने में 20 साल लगते हैं, तब तक कोई ये चीज बदलती है। डिकेड्स में चीजें बदलती हैं। मतलब एक बार पढ़ चुके हो तो एक साल में दोबारा पढ़ रहे हो, चल खैर कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। असलम खान इज राइटिंग, सर इजी पढ़ा है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन में सब कंसेप्ट क्लियर हो गया था। रियली मेक इजी वेरी इजी फॉर मी, थैंक यू। अरे वाह, प्लेजर ऑल माइन, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इजी में मजा आएगा। टेक्निकल मटेरियल साइंस में देखते हैं चलेंगे, चलेंगे उसमें मजा आएगा। जीएस में मैं भी जान रहा हूँ थोड़ा उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस पर चीजें करना पड़ता है और दौड़ते जाता है रादर देन डूइंग इन डेप्थ एनालिसिस। यहाँ कवरेज पर जाना पड़ता है। बाकी नंबर है आल्सो सी एक बार अच्छा तो आप हेल्प करते हैं। साथ में कहीं प्लेटफॉर्म पर समाज कहीं मोटे सेक्टर पर साइड बैठे और पुराना है बाकी जनरली अवॉइड टू कम आंसर टू कॉन्सेप्ट। आइए पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लिख लीजिए लाइन जो मैंने बताया कि दो इलेक्ट्रॉन के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तीन सेम नहीं होंगे तो चौथे को दिक्कत करेगी। सो दिस वन इज पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली का इसको लिखेंगे in any atom, no two electrons can have all the four quantum numbers to be same. In any atom, no two electrons can have all the four quantum numbers to be same. Or in other words, each electron will have a different set of four quantum numbers in an atom. Each electron will have a different set of quantum numbers. Each electron will have a different set of quantum. Electron will have a different set of quantum numbers. Each electron will have a different set of quantum
अच्छा युवा इलेक्ट्रिकल, अरे तुम बड़ा सीरियसली पढ़ना हो, इलेक्ट्रिकल में तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा खेल कर रही हो, गंदा खेल कर रही है ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल। पेपर 1 में तो आएगी और पेपर 1 का जो पढ़ेंगे इसी के ऊपर बेस बना करके पेपर 2 का होगा, और पेपर 2 में इट इज हाईली वेटेड इक्वल टू द मशीन। आप देखिए तो मशीन आप 150 घंटे पढ़ते हैं और उससे 13-14 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, और ये दोनों मिला करके पेपर 1 की मिला करके 50 घंटे पढ़ेंगे, और ये 10 क्वेश्चन मैं पेपर 1 में मान लूँ और 14-15 क्वेश्चन पेपर 2 25 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है, 22-25 क्वेश्चन। सो फॉर इलेक्ट्रिकल दिस सब्जेक्ट इज लाइक इन असली के लिए इलेक्ट्रिकल में ही है इस सब्जेक्ट का वेरी हैवी वेटेज, बिकॉज़ पेपर 1 एंड 2 दोनों में इसका बहुत यूज है। चलिए आगे चलते हैं। सर गो अहेड। हेलो भाई, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो भाई। ठीक है, सो यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। यूजुअली मैं 4 की क्लास में ब्रेक लेता हूँ, बट जैसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, अभी हिम्मत करके आ तो गया हूँ आज पढ़ाने के लिए, अभी तक लंबा चला नहीं पा रहा हूँ, और जानते हैं आप में से किसी को भी वायरल सबको ही हुआ होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑनलाइन दिक्कत होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 15 मिनट का, और ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे 9:30 तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली ये रोज ब्रेक नहीं होगा, दिस इज द फर्स्ट डे टुडे वी आर डूइंग, सो आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 15 मिनट रादर देन लीविंग द क्लास, आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 15 मिनट एंड देन रिटर्न बैक, एंड देन थोड़ा सा मैं चाय वाटी में थोड़ा एनर्जी आ जाएगी तो कंटिन्यू 15 मिनट ब्रेक, 15 मिनट ब्रेक के बाद दोबारा करेंगे। वेलकम बैक। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सपोज ये एक एटम, ये एक न्यूक्लियस है और ये एक एटम, ये दूसरा न्यूक्लियस है और ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों एटम एक दूसरे से आइसोलेटेड दूरी पर हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन पर से उसके न्यूक्लियस का फोर्स होता है, लेकिन जब दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को, दैट्स क्वाइट नेचुरल, ये कुछ नया नहीं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल कर देंगे और ये न्यूक्लियस आपस में रिपेल कर देंगे। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। सो इस तरह से इन दोनों एटम के ऊपर कुछ अट्रैक्टिव और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस अपोजिट चार्जेस की वजह से और रिपल्सिव फोर्सेस सेम चार्जेस की वजह से, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन। इस तरह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का कॉम्बिनेशन। अब नेट फोर्स में अगर इस सिस्टम पर मानूं तो नेट फोर्स इस सिस्टम पर अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन, ये आपके पास नेट फोर्स है। दिस विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन। आइए लेट्स सपोज मैं ये इंटर एटॉमिक स्पेसिस, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मैं आर कहता हूं। आर इंटर एटॉमिक, ये किसी आर्बिट्ररी रेडियस नहीं है बल्कि इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस यानी दो एटम के बीच का स्पेस। लेट्स सपोज मैं यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स की नोट कर रहा हूं, तो यहां पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स भी अपोजिट नीचे है। आप इसको ऊपर से ऊपर, इसे नीचे से ऊपर को उल्टा करना है, बस जस्ट ये होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट। हम सभी जानते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन, दैट वैल्यूज 1/r²। आपको लिखा था मैंने, इट इज 1/4πε0 सो इट वैल्यूज लाइक दिस। ये अगर इस तरह से वैल्यू करेगा तो इट इज हाइपरबोलिक लाइक दिस, एंड दिस विल आल्सो वैल्यू लाइक दिस। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। देयर विल बी सम पॉइंट वेयर आप कैंसिल ईच अदर। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये दोनों फोर्स को कैंसिल कर देंगे। उनका नेट 0 होगा। मैं इस डिस्टेंस को जहां पर ऐसा होगा उसे r0 मान लेता हूं। अब आप एक चीज देखिए, इस f नेट इस पर 0 किसी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, fa प्लस fr, दिस इज 0 एट r इक्वल टू r0। r इक्वल टू r0 पर 0 हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे। अब एक बड़ी बात देखिए यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप डिस्टेंस इससे कम करने की कोशिश करेंगे तो देयर बिकम अ स्ट्रांग रिपल्सन जो इसको इसी पॉइंट पर लाने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस आप r0 से कम करने की कोशिश करेंगे सो इट विल एक्सपीरियंस अ स्ट्रांग रिपल्सन। आप ऐसे इसको प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट द नेट कर्व लाइक दिस। नेट कर्व जो होगा वो ऐसे प्लॉट हो सकता है। This is the F net. This curve is denoted F net. So when you are reducing the distance, there is a strong repulsion which will keep these two atoms away at the same distance r0. यदि आप इनको एक दूसरे से दूर ले जाओगे, r0 से ज्यादा डिस्टेंस पर ले जाने की कोशिश करोगे, then they will try to attract each other. तब अट्रैक्शन इफेक्ट भी दोनों करेगा। इस तरह से आप देखो तो जो अट्रैक्शन है वो दोनों एटम को दूर जाने नहीं दे रहा है और जो रिपल्सन है वो दोनों को कोलिस होकर के एक होने नहीं दे रहा है। और इस तरह से ये अट्रैक्शन और रिपल्सन मिल करके इस एटम को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखेंगे। So this is the force which is keeping these two atoms together, and that force is nothing but electrostatic force and basically sum of attraction and repulsion. आप देखिए r0 से कम डिस्टेंस करने की कोशिश करोगे, आप चाहो दोनों को मिलाकर के एक बना दें तो रिपल्सन will come into picture and will push them away up to this point. r0 से ज्यादा डिस्टेंस आप दूर भगाना चाहोगे तो attraction will come into the picture and that will keep them together. So this force which is sum of attraction and repulsion will try to keep them together. ये इन दोनों को साथ में रखने की कोशिश करेगा। So ऐसा force जो दो
को साथ में रखने की कोशिश करता है, उसे नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड, दैट इज नोन एज केमिकल, which is known as chemical bond. There is a binding force between the atoms which keeps them together, which is the binding force between atoms or molecules. इसी तरह मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स लगेगा, so it is the binding force between atoms or molecules. हालांकि मैंने सिर्फ एटम बोलिए, इसको ठीक है. These forces are electrostatic force. It is electrostatic force which is keeping them together. ये एक बार पूछा ईवीएस में शायद 2 साल पहले कि जो एटम को बांध के रखा है फोर्स को कहता है, so it is electrostatic force. This electrostatic force is also known as Coulombic force. इसे Coulombic force के नाम से जानते हैं. This is known as Coulombic force. Please draw this graph and note down please. Then अब ये केमिकल बॉन्ड को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं. कैटेगराइज दिस केमिकल बॉन्ड इनटू व्हाट इज केमिकल बॉन्ड. ये केमिकल बॉन्ड को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं. कैटेगराइज दिस केमिकल बॉन्ड्स इनटू व्हाट इज केमिकल बॉन्ड. सो इन्हें दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है. प्राइमरी बॉन्ड
दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी बॉन्ड। एक्चुअली जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम। सो एटम्स को जो फोर्स होल्ड करता है उसे प्राइमरी बॉन्ड। अब एटम एटम मिलकर के सेकेंडरी यूनिट बन जाएगी। जो सेकेंडरी यूनिट बनती है उसे मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को जो होल्ड करके रखता है उसे वैन डेर वाल्स फोर्स या सेकेंडरी बॉन्ड कहते हैं। सो आई कैन से दैट इट इज इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड। ठीक, इट इज इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर bond. Then it is electrostatic force, electrostatic force. यहाँ जो फोर्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में उसे वैन डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। सो इट इज वैन डेर वाल्स फोर्स। बॉन्ड इज बेसिकली नथिंग बट फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू कीप टू एंटिटीज टुगेदर। सो एटम्स को जो साथ रखता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मॉलिक्यूल को जो साथ रखता है वो वैन डेर वाल्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर की सबसे स्ट्रांग फोर्स होते हैं। सो दिस बॉन्ड इज स्ट्रांग एंड इट इज स्ट्रांग व्हेन इट इज स्टेबल। इट इज स्ट्रांग एंड स्टेबल। वैन डेर वाल्स फोर्स वीक होते हैं और जो फोर्स वीक होते हैं आसानी से टूट सकते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल। So this is the classification of these bonds. Please note. Then further, I would like to say, this parallel bond is further classified in three broad categories: ionic bond, and then covalent bond, and then metallic bond. These are the three broad groups in which these parallel bonds is categorized. This parallel bond is categorized. Please note it. Then आइए वन बाय वन इन बॉन्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो पहला लेकर चलते हैं आइए बॉन्ड। इससे खूब क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है आइए बॉन्ड से, खूब ध्यान से समझिए आइए बॉन्ड। आइए बॉन्ड समझाऊं उससे पहले छोटी सी रफ आइडिया ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड। मैं फर्स्ट बी ही बना रहा हूं। मैं रिमेनिंग जो फर्स्ट बी या सेकंड बी उनको छोड़ रहा हूं, सिर्फ एक ग्रुप बना रहा हूं। 4 5 6 7 8 यानी पीरियोडिक टेबल का वो फॉर्मेट ले रहा हूं जहां पे 8 कॉलम्स हैं। तो ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, एंड दिस बेटा, मैंगनीज, कार्ब, बाल, गंगाधर, इंडियन थे, काशी जी, संतों की पत्नी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ओसामा से तेंदुलकर, कॉन्टन में, क्लोरीन, और This eighth group does not participate in any kind of bonding, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट मतलब आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा केमिस्ट्री रिकॉल करोगे, जिन भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एलिमेंट कभी भी किसी भी तरह की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है एंड दे विल नॉट बॉदर अबाउट टेकिंग या गिविंग इलेक्ट्रॉन। दे आर स्टेबल। लेकिन बाकी के सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ये सारे एलिमेंट नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फिगरेशन करना चाहिए। जैसे क्लोरीन नियॉन के जैसा बनना चाहिए, क्लोरीन आर्गन के जैसा बनना चाहिए, बोरान क्रिप्टन के जैसा बनना चाहिए। सो ऐसा होने के लिए अगर इनको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन गिव अप करेंगे। इस पूरी पीरियोडिक टेबल का इस पूरे परिवार का सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन है। का छोटा बच्चा आंसर नालायक होता है, हैप्पी कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। ये इस फर्स्ट ग्रुप में होकर के भी फर्स्ट ग्रुप के कैरेक्टर को फॉलो नहीं करेगा। क्यों, ये बात में बात करेंगे, बाकी सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए ये मिड में है, बीच वालों का कैरेक्टर भी आसानी से बताना मुश्किल है, अभी से भी स्ट्राइक आउट करते हैं। उससे पहले मोस्टली जितने एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स, और उसके बाद में जितने हैं जनरली नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स। जो मेटल्स हैं उनके आउटर ऑर्बिट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। The elements which are metals, their outer orbit is having either 1 electron or 2 electron or 3 electron. जैसे एक एग्जांपल से इसी परिवार का एक एलिमेंट है सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। 11 कैन बी रिटन एज 2 8 and 1। सो ये सोडियम का न्यूक्लियस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस वे इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 1। सो सोडियम के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो उसके आउटर ऑर्बिट में कितने चाहिए? 8, बट इसके पास है कितना? सिर्फ 1। तो या कोई इसे कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बहुत मुश्किल है क्योंकि रिक्वायरमेंट 8 की है, उसके आधे से भी कम। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कैन गेट 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स हैं इनके आउटर ऑर्बिट में बहुत कम इलेक्ट्रॉन, या तो 1 2 8। सो दे डोंट हैव टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन, रादर दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन पुट करके चला जाए ठीक, तो आउटर ऑर्बिट कौन सा बनेगा? ये वाला ऑर्बिट क्या बनेगा? आउटर। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ये इलेक्ट्रॉन अगर हट गया तो आउटर ऑर्बिट दिस एंड दिस हैज ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। So all these metallic atoms have tendency to give up their electrons so that they can become stable. And when they give up their electron, they become positive ions. So हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, this sodium neutral atom will give up its electron, will make Na plus and it will be electron. Right? This is cation. This is what? Cation. Right? Sodium giving up 1 electron and it's making a positive ion that is known as cation. Now you see, let us take one more element.
Let's suppose I take इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं sodium, it is giving 1 electrons, equals Na plus 1. Now let's suppose 10 plus 7 place हो गया, non-metallic है, जिसके आउटर ऑर्बिट में बहुत इलेक्ट्रॉन है, 5, 6 या 7. So let's suppose I take chlorine. So chlorine का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, chlorine, this is Cl, then first orbit, then second orbit, then third. So here you have 2 electrons. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है? So आइए जरा देखिए. अब क्लोरीन के पास आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है. इसका एटॉमिक नंबर 17. 17 का मतलब 2, 8 है. So इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. It will not have tendency to give up electron. क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. ऐसे समझिए कि किसी को स्टेबिलिटी 200 रुपए पर है. अगर उसके पास 190 रुपए है तो 90 खर्च नहीं करना चाहिए. स्टेबिलिटी अगर 100 पर आएगी या 200 पर आएगी तो वो 10 इकट्ठा करके 200 पर स्टेबल होना चाहिए. कुछ वैसा ही इनके पास है. आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. They have already 7 electrons, so they are greedy for 1 electron. So they will try to snatch 1 electron from the remaining atom. तो ये पड़ोसी जो सोडियम है उससे 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. So ये snatch this electron और इसका ऑप्टेट पूरा. तो इस तरह से जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के पास में आएंगे तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप करके पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों के ऑप्टेट पूरे हो जाएंगे. तो दोनों की स्टेबल हो जाएंगे. So chlorine will take electron. When it is taking electron, it will make Cl minus. So this is your anion. This is anion, and this is cation. This is cation. एक anion है और दूसरा cation. अब ये cation और anion अपोजिट चार्जेस हैं. So they will attract with each other strongly. और इस तरह से इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं. और इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं. They will attract each other. मैंने एक एलिमेंट से समझाया, बट एक्चुअली में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है. Let us suppose it is Na plus. Let me it is Na plus, right? It is Cl minus. It is Cl minus. It is Cl minus. Here you will have Na plus. Na plus. Here you will have Na plus. Here you will have Cl minus. Here you will have Na plus. Here you will have Na plus. Right? So again, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे. So here you have attraction force like this. 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 Here like this. Here like this. Here like this. You have attraction and repulsion forces. Like this, like this, like this. So you see, in each direction, equal strength of force. Everywhere you will find a force of equal strength. तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स करना. हर डायरेक्शन में एक सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोरीन के साथ दिस वे द स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड. सो इट इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स बिटवीन द टू आयंस एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल. ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है बल्कि नॉन डायरेक्शनल है. हर डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेंथ का बॉन्ड बनकर तैयार होगा. कुछ और छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करिए. जनरली दिस बॉन्ड may be formed between the metallic and non-metallic elements because metallic elements will have tendency to give up electrons and non-metallic elements will have tendency to take electrons. This way metallic elements will make a positive ion and non-metallic elements will make negative ions and hence attraction forces will be developed that is known as ion. जितने भी बॉन्ड होंगे उन सब में सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस के बीच का फोर्स है. कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखिए. वैसे तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होती है. यहाँ न्यूट्रल सोडियम की रेडियस क्लोरीन से ज्यादा होती है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है. लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या होगा देखिए. क्लोरीन ने अपना पूरा का पूरा तीनों ऑर्बिट मेंटेन रखा है. सो इसकी जो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस है वो आर है. लेकिन सोडियम का एक ऑर्बिट खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस ऑर्बिट का कोई ऑर्बिट नहीं रहेगा. सो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है वो आरसी है. आरसी इज कैटायन रेडियस. इट इज कैटायन रेडियस. कैटायन की रेडियस और आर जो है वो एनायन रेडियस है. इट इज एनायन रेडियस. हमेशा आप देखेंगे कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप कर रहा है. उसका ऑर्बिट खत्म हो गया कि इनर ऑर्बिट उसको स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि जहां तक इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिट कंप्लीट करेंगे. इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑर्बिट खाली जगह है. उसका कोई लॉजिक नहीं है. ठीक. So effective size of cation is always smaller than the size of anion. या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो मैं RC upon RE का रेशियो निकालूं तो हमेशा लेस देन 1 आएगा. सेरेमिक मटेरियल पढ़ाऊंगा उसको बताऊंगा कि वो आयनिक मटेरियल होते हैं. ये महत्वपूर्ण कंडीशन बनती है सेरेमिक कंपाउंड बनने के लिए और इसको आईएएस में कई बार पूछा गया है. 2 बार पूछ चुके हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन. सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन द एनायंस. सो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमें क्या बताया ध्यान दीजिए. ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड है. ठीक. मेटल और नॉन मेटल के बीच कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए कार्बन का होना जरूरी है. और आपने पहले ही कह दिया कि कार्बन को ग्रुप में वो तो बनाएगा नहीं. आयनिक या तो ये और ये भी करके बना है. इसका कोई रूल नहीं है. इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे. सो दिस आयनिक कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये क्या है? इनऑर्गेनिक. दीस आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ठीक है. और ये जो बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है. इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड. इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बिकॉज़ बॉन्ड इज स्ट्रांग इन ऑल द डायरेक्शंस. ये हर डायरेक्शन में स्ट्रांग बॉन्ड है. सो इस वजह से हम नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कह रहे हैं. सो कुछ की पॉइंट मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस के बीच का फोर्स है. बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है. अगर स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है तो एटम्स बहुत क्लोजर आ जाएंगे. इनका एटॉमिक स्पेसिंग बहुत कम होगी. एटम्स आर वेरी क्लोजर यानी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी. नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है क्योंकि हर डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेंथ है. सो इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड. ठीक. कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन द एनायन. सो RC upon RE रेशियो ऑफ कैटायन टू द एनायन रेडियस इज ऑलवेज लेस देन 1. सो दीस आर फ्यू पैरामीटर्स जिन पर हमें जजमेंट करने की जरूरत है. ठीक. आइए आगे बढ़ते हैं. कुछ बातें देखते हैं. अनुराग बसवाल पूछ रहे हैं सब्जेक्ट इज फर्स्ट क्लास योर. कह सकते फर्स्ट क्लास. कल थोड़ी 1 घंटे पढ़ाया था. इंट्रोडक्शन दिया था और तबियत ठीक नहीं है. बुखार जुकाम से ग्रसित हूं. तो इफेक्टिवली आज ही पहली क्लास है. कल की बात है. तो अनुराग इज इफेक्टिवली फर्स्ट क्लास. कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. आगे पॉइंट्स लाएंगे. कर रहा हूं. It is found in compounds. It is found in compounds. It is found in compounds. Compounds that are composed of
that are composed of both 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 metallic and non-metallic elements. It is found in compounds that are composed of both metallic and non-metallic elements. Metallic and non-metallic elements. Next one. The attractive bonding forces are coulombic. 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 That is, positive and negative ions attract one another. That is, positive and negative ions the attractive bonding forces are coulombic. That is, positive and negative ions attract one another. Attract one another. Attract one another. Full stop. Attract one. Next one. Cations are smaller in size than anions. Cations are smaller in size than anions. Cations are smaller in size than anions. Full stop. Next one. Ionic bonding is termed non-directional. Ionic bonding is termed non-directional. Ionic bonding is termed non-directional. Batches. The magnitude of the bond is equally. The magnitude of the bond is equally all directions. Magnitude of the bond is equally all directions. All directions. Magnitude of the bond is equal in all directions. Around an ion. Around an ion. Around an ion. अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कर जाती है. इस मटेरियल को स्टेबल होने के लिए इस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ जितना पॉसिबल हो उतने ज्यादा नेगेटिव आयंस हो. सो एज मच पॉसिबल एज नेगेटिव आयंस मस्ट सराउंड दिस पॉजिटिव आयन ताकि हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा करके ये और स्टेबल बना रहे. ठीक से इस पॉइंट को. It follows that हेलो सब्सक्राइब भाई. It follows that for ionic materials to be stable, 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 all positive ions must have, all positive ions must have, all positive ions must have, as nearest neighbors, as nearest neighbors, as nearest neighbors, as nearest neighbors, negatively charged ions, negatively charged ions, as nearest neighbors, negatively charged ions, in a three-dimensional scheme, in a three-dimensional scheme, in a three-dimensional scheme, and vice versa, and vice versa. And what? Ionic materials have relatively high melting temperature. Ionic materials have relatively high melting temperature. Relatively high melting temperature. Next one. Ionic materials are hard and brittle. Hard and brittle. Furthermore, electrically and thermally insulated. Hard and brittle. Furthermore, electrically and thermally insulated. देखो थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यू डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन हियर. चार्ज तो है बट चार्ज आर फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट मूव, सो यू डोंट हैव अ फ्री कैरियर टू ट्रांसपोर्ट इन द मटेरियल. और फ्री कैरियर ना होने के बाद इनकी इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिविटी नेगेटिव होती है, सो दे आर इंसुलेटर्स. ठीक, हियर आर फ्री एंड brittle. Furthermore, electrically and thermally insulated. Hard and brittle. Furthermore, electrically and thermally insulated. देखो थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यू डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन हियर. चार्ज तो है बट चार्ज आर फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट मूव, सो यू डोंट हैव अ फ्री कैरियर टू ट्रांसपोर्ट इन द मटेरियल. और फ्री कैरियर ना होने के कारण इनकी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर फिक्स्ड, बट यू डोंट. देखो
Thermal या furthermore electrically brittle, hard and brittle. Furthermore electrically and thermal insulator. देखो thermal या electrical conductor होने के लिए free electron चाहिए, but you don't have free electron here. Charge तो है, but these charges are fixed, right? They cannot move. So you don't have a free carrier to transport in the material. और free carrier ना होने के बाद उनकी electrical या thermal conductivity negligible होती है, so they are insulators. So ionic materials are characteristically hard and brittle, and furthermore electrically and thermal insulator. Electrically and thermal insulator. These properties are a direct consequence of electron configuration and oblique लगा करके R and oblique R nature of ionic bond and oblique R nature of ionic bond and oblique R nature of ionic bond and oblique R nature of ionic bond. आज की क्लास को यहीं पर रोकूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास टाइम तक हुआ करेगी, 9:30 तक हुआ करेगी, 9:45 तक 10 जा सकती है, लेकिन टॉपिक कैसे चल रहा है उस बात में देखेंगे। बट आज अभी थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा ठीक हो जाए, बेहतर रिदम में आए, देन स्टार्ट करेंगे। अगला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल 5:30 पर मैं आपके लोगों के सामने दोबारा पेश होऊंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग टॉपिक्स टुमारो एट 5:30। थैंक यू, गुड नाइट, सो बाय। चलो भाई खत्म। Forces are और तबियत ठीक नहीं है, have tendency to take electrons. This way metallic element any plus. Here you will have any and but not your anion. This is N. So here you have 2 electrons. The elements which are Bal, Gangadhar, Indian, Kasi ji, Santu की प्रकृति, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ओसामा से तेंदुलकर पाउडर माने, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीनिंग और क्राइस्मा। This 8th group does not participate in any अरे क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट मतलब आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। मिस्त्री सॉरी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री रिकॉल करोगे, जिन भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और भाई क्या हाल है, क्या शुरू है? आवाज तो बराबर आ रही होंगी ना मेरी? रिप्लाई नहीं आया अभी तक। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट और ये सारे एलिमेंट नियरेस्ट इनर गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। जैसे क्लोरीन नियॉन के जैसा बनना चाहिए, क्लोरीन आर्गन के जैसा बनना चाहिए, बोरान तो ऐसा होने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी एक्सेप्ट करेंगे कि जरूरत पड़ेगी। इस पूरी पीरियोडिक टेबल में पूरे परिवार का सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन, घर का छोटा बच्चा है करना लायक ये इस फर्स्ट ग्रुप में होकर के भी फर्स्ट ग्रुप के करेक्टर को फॉलो नहीं है। क्यों? ये बात यहाँ देखिए, ये मिड में बीच वालों का करेक्टर आसानी से बताना मुश्किल है। उससे पहले मोस्टली जितने एलिमेंट्स हैं ये नेटवर्क्स और उसके बाद में जितने जो मेटल्स हैं उनके आउटर ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। The elements which are metals, their outer orbit is having either 1 electron or 2 electrons or जैसे एक एग्जांपल, इसी परिवार का एक एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 8। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ लेवल है 8। सो ये सोडियम का न्यूक्लियस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। हेलो मिस्त्री। सो दिस वे इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4 तो यहाँ से कंडीशन लेवल बहुत होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट 8 की है, उसके आगे से भी कम तो 20 कर देंगे कि कैसे करेंगे। तो ये जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स हैं इनके आउटर ऑर्बिट में बहुत कम इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। तो दे डोंट हैव टेंडेंसी टू टेक
8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ये इलेक्ट्रॉन अगर हमने बात आ रही है एंड दिस हैज ऑलरेडी been compounded. So all these metal tendency to give up their electron so that they can become positive. And when they give up their electron, become positive ions. So हम लोग ऐसे sodium, neutrality, will give up its electron, right? This is better. Right? Sodium giving up its one electron and positive ions and give up their electron. Now let us take one more thing. Let us suppose I take non-metal. जिसके आउटर आपसे बहुत इलेक्ट्रॉन 5 6 7 तो let's do like this. Slowly का स्ट्रक्चर चेक करो. Second one. So here you have electron. You have 1 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7. So अब flowing के पास आउटर आपसे 7 तो क्या होता है 7 इतना टेंडेंसी ये इसके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हम जल्दी 200 देता है अगर उसके पास 90 में है तो 90 का क्या करता है जल्दी 100 का आइए वो कराइए तो वो 10 का कुछ वैसा नहीं के पास अगर आप लेके एक इलेक्ट्रॉन से है और सेवन इलेक्ट्रॉन तो आगे भी फालतू तो देखो आई थिंक स्मैश वन इलेक्ट्रॉन तो ये पड़ोसी वो सोडियम उससे इलेक्ट्रॉन और काउंटेड तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन की बात आई तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को करने की बात करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और दोनों के आपसे पूरे बताइए क्लोरीन विल टेक इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन this is your anion. एक anion होता है anion. अब ये कैटायन और anion का opposite charge. So they will attract each other. और इस तरह one ion और इस तरह compound होता है ion. They will attract. मैंने एक एलिमेंट समझा पर एक्चुअली में कुछ ऐसा ही है. Let us suppose any here we have here we have here we have here we have so again carry on so here we have connection here we have here we have here we have attraction is possible so see in each direction equal strength everywhere is required. But in this particular direction, her direction is so it's a very strong iron and non-direction. This particular direction is less, but non-direction. Her direction is equal to someone. कुछ और चीज़ होती है आप लोग जनरली this one is found in the non-direction because mechanical elements have to give up and non-mechanical elements have to take. This mechanical elements make a body mind and non-mechanical elements make good mind and some dimension. जिनमें भी बॉन्ड होंगे उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो अपोजिट चार्ज कुछ और मार्क्स होगा वैसे तो पीरियड टेबल की So in this type of attack, always monopolar and attack. जब इससे सबको याद रखते हैं मैं आपके पास आऊंगा इसके पास चल लेते हैं सैम पर ये पावर को बताऊंगा वो आज ये कंडीशन बन गया सैम का पावर अब इसको आज से चलना वो आता है so next to what attack smaller in size than attack तो बात पॉइंट में जाता है ये देखा होगा करने वाला पॉइंट ये आगे तो हम करने के लिए कार्बन का होना पर आपने पहले कैसे कार्बन को खुद को बनाएगा नहीं बन जाए और ये इसका कोई इसका मतलब जो आयन कंपाउंड वो आगे इस आयन कंपाउंड इनऑर्गेनिक क्या है इनऑर्गेनिक और फिर जो बॉन्ड है इज नॉट डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल बिकॉज़ बॉन्ड इज स्ट्रांग इन ऑल डायरेक्शंस नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है तो कुछ पॉइंट बेटा बता दें इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है और स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड तो एकदम बोल रहा है बहुत कैलिफोर्निया में बहुत नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कैटायन इज मॉडल साइड लाइक कैटायन तो आपके पास आई रेशियो ऑफ कैटायन वेरिएबल इज ऑलवेज लेफ्ट साइड so these are two parameters अनुवाद बसवाल से अकेडमी पर क्लास में कैसे पेपर क्लास कल थोड़ी ये करके पढ़ाया था कि सेक्शन दिया था और एक्चुअली आज का क्लास का बस हां गुड तो एकदम बहुत बोल रहा है आपको पॉइंट में जाता है ये देखा लो नॉन नेगेटिव इसका कोई नहीं इसका मतलब जो आई क्या है इनऑर्गेनिक क्या है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या है इनऑर्गेनिक these are inorganic compounds ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ठीक है अब ये जो बॉन्ड है ये
डायरेक्शनल बॉन्ड इट इज नॉट दैट इसका कोई मेटल और नॉन मेटल के बीच कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए कार्बन का होना जरूरी है। और आपने पहले ही कह दिया कि कार्बन को कुछ है वो तो बनाएगा, लेकिन आयन या ये और ये मिलकर के बनाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे। तो दिस आयनिक कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है? इनऑर्गेनिक। दीस आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, व्हिच इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, द बॉन्ड इज स्ट्रांग इन ऑल डायरेक्शंस। ये हर डायरेक्शन में स्ट्रांग बॉन्ड है, तो इसलिए इसे हम नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कहेंगे। तो कुछ की पॉइंट मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है किसी ऑपोजिट डायरेक्शन के बीच का फोर्स है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। अगर स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है तो एटम्स बहुत क्लोजर आ जाएंगे, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत कम होगी, सो एटम्स आर वेरी क्लोजर, यानी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है क्योंकि हर डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेंथ है, सो इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, ठीक। कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन द एनायन, सो आरसी ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक। कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन द एनायन, सो इट इज लेंथ आरसी का डायरेक्शनल बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक। सो कुछ की पॉइंट मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड ऑपोजिट डायरेक्शन के बीच का फोर्स है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। अगर स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है तो एटम्स बहुत क्लोजर आ जाएंगे, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत कम होगी, सो एटम्स आर वेरी यानी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है क्योंकि हर डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेंथ है, सो इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, ठीक। कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन द एनायन, so RC upon RE ratio of cation to the anion radius is always less than 1. So these are the few parameters जिन पर हमें जजमेंट करने की जरूरत है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई स्ट्रीम ओवर। अगर कोई चैट अगर कोई मतलब लाइव होगा तो मैसेज कर सकता है 2 मिनट, नहीं तो मैं स्ट्रीम बंद कर देता हूँ। चलो बाय बाय, स्ट्रीम इज ओवर, शाम को मिलते मस्त।